मोशन, राइट। सो अब हम बात करने वाले हैं मोशन के ऊपर। सो मैंने टॉक अबाउट मोशन, व्हाट थिंग्स पॉप्स इन योर हेड, कैसा मोशन में हम ये पढ़ सकते हैं, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। तो व्हाट थिंग पॉप्स इन योर हेड व्हेन आई टॉक अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? जस्ट गिव मी। movement. हाँ, मूवमेंट। गिव मी सम टर्म्स के हम इसके बारे में बात करेंगे, इसमें हम इसके बारे में बात करेंगे, स्पेसिफिक टर्म्स। We can talk about the speed, the ओके, velocity, the गुड, acceleration. गुड, गुड, परफेक्ट, ठीक है। सो ये चैप्टर मोशन लिखा हुआ है लोगों ने बुक के अंदर, सो इट्स पार्ट ऑफ किनेमेटिक्स, राइट। सो दिस थिंग इज कॉल्ड किनेमेटिक्स। अब किनेमेटिक्स क्या होती है वो कर लेते हैं डिस्कस इन अ ब्रीफ मैनर। व्हाट इज किनेमेटिक्स? डज एनीवन हैज एनी आइडिया अबाउट किनेमेटिक्स क्या होती है? सो इट्स द स्टडी ऑफ मोशन without the reference of force. Okay, so what do I mean by that? Let's imagine this is your football, okay, and let's say, let me just keep equality over here. This is Mashal. Mashal is playing football, okay. She shoots the football, and it basically moves and drops over here. And let's say this is the goal, and she basically scored the goal, okay. इसके अंदर we can discuss about velocities कितनी थी बॉल की, ठीक है। इसकी let's say acceleration कितनी थी, ठीक है। we can talk about इसकी हाइट कितनी, what was the maximum height it went up in the sky, in the basically sky, obviously. So we can talk about the displacement over here. We can talk about कि how much time it took, ठीक है। जैसे this is point m, maximum point, can we, हाँ, let's how much time it took to reach the maximum point. So we can talk about, so anything, any, basically we're talking about motion without reference of force. तो इसमें हम फ्रिक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे, इसमें हम लोग ड्राइव फोर्स के बारे में बात नहीं करेंगे, इसमें के अंदर we will not talk about air resistance or forces, the engine force, ठीक है, how much force we applied on the football. So we can only deal about initial velocity, we talk about velocities, acceleration, displacement, time, ठीक है। So there will be no discussion on forces. So that is why it is called kinematics. And the next chunk of motion we will call dynamics. Dynamics के अंदर we will basically deal with motion with reference to force. ठीक है। So लोगों ने सिर्फ इसको motion बोला है, just to keep it simple. So in actual it is called kinematics, right? So let's start with the first thing which Mashal said, ठीक है, speed, right? तो जब भी हम motion के बारे में बात करते हैं we talk about speed. So what is speed? What is speed? Yes, anyway. What is speed? Amount of distance traveled particular period of time. Okay. Okay, ठीक है, good. So yeah, it you said कि it is the distance travel in a particular interval of time. ठीक है, that's correct. That's correct. Let me draw my standard example which I use for teaching this phenomena. Let's imagine you have Bugatti. ठीक है, this is my Bugatti, and let's imagine you are cruising, right? This is point A. Point A is a start way. You went to point B, and you know the distance between point A and B, right? That is, let's say D. Okay. And इन लोगों ने s इस्तेमाल किया है डिस्टेंस के लिए, so let's use s ताकि you don't get confused. Let's call it s, and you took, let's say, time t travel from A to B, ठीक है। So if you want to find कि आप कितनी meters cover कर रहे थे in a certain interval of time, that becomes speed, right? So what is speed? If I just define speed in a single definition, the speed is a rate of change of distance, ठीक है। ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन सेम है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट रेट, सो रेट के बाद जो भी क्वांटिटी आती है, जैसे इट हैज डिस्टेंस ओवर हियर, एनी क्वांटिटी व्हिच इज कमिंग आफ्टर रेट इज गोइंग टू गेट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। सो स्पीड इज बेसिकली व्हाट, इट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, सो इट्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो इन लोगों ने एस इस्तेमाल किया हुआ है, मैं हमेशा डी इस्तेमाल करता हूँ। लेट मी यूज अगेन, स्टिक टू कन्वेंशन, एस डिवाइड बाय टाइम, राइट।
So the distance you travel and the time you took, right? So you're gonna just divide it out and you're gonna get speed, right? Achari, let's imagine now we have different types of speeds. ठीक है, we can have different types of speeds. वो मैं बता देता हूँ आपके. तो speed की we had different types. We have average speed. We have instantaneous speed. Instantaneous speed. ठीक है. So अब what is average speed? What is instantaneous speed? उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. Let's talk about average speed first. Okay, so is everyone here? Is everyone here? Am I audible? Yes, sir. Okay, so you're talking about speed के types and we have the first time which is average speed. So what is average speed? ठीक है. So let's imagine आपने you have the point A and you want to go from to point B and that is the direction, the path which you took is basically this. Okay, let's say you're doing a trekking and you start from here and you follow this path. ठीक है. And the total distance from point A to B मुझे पता है. ठीक है. That is SAB is let's say 4 kilometers. And I know how what was the total time which you took to travel to trek the entire distance. So you know कि TAB कितना है. Let's say this is 2 hours. ठीक है. So you know the total distance, you know the total time. So let's say even when you started to trek, you had the energy, right? You took some, let's say, chocolate bars, and you had energy. You were basically jogging, right? You started with a higher speed, and let's say फिर आप थक गए, फिर आप slow down हो गए, आपने थोड़ा rest लिया, फिर आप चले. So you just started walking, then you started jogging. ठीक है, then you took a stop. So on average, you basically travel 4 kilometers in total, and you overall time jogging that is 2 hours. So if I want to know कि what was the average speed जिस पे आप चल you basically traveled from point A to B, उसके अंदर आप रुके भी, आप फिर भागे भी, आप walk भी कर रहे थे. So if I want to know this an average estimated values, that is called average speed. ठीक है. It doesn't include the accurate answers कि आप specific time में इतनी speed भाग रहे थे, फिर specific इस point आप रुक गए थे बैठ के. So it's just an average speed which gives you an average estimate कि हाँ आपकी borderline threshold speed was basically around this value, right? So what is the formula for that? आप formula already देख चुके हैं. Formula is total distance traveled divided by total time taken. Okay. So this is the formula for average speed. You need the total time distance. You just need the total time. Just divide it out and you get the average speed. Right? So this is the formula for average speed, which I should take over here. Right. So this is your idea of average speed. तो अगर हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 4 किलोमीटर, हमें टाइम दिया हुआ है 2 hours, your time should be in seconds because that is the base unit of time. Your distance should be in meters, that is the base unit of length. ठीक है. So you need to make sure before solving the questions आपके सारे units are have removed the prefixes. ठीक है. And you have converted into base units. So let's just apply the formula. So average speed का formula क्या है हमारे पास? The average speed formula is total distance divided by total time, right? सो आपके पास जो डिस्टेंस है दैट इज 4 किलोमीटर्स. तो किलो इज 10 to the power 3. ठीक है. नाउ इट्स इन मीटर्स एंड योर टाइम वाज 2 hours. सो 2 into 3600 seconds. अब ये कैसे आया? तो 1 घंटा को कन्वर्ट करने के लिए 1 घंटे के अंदर ये 60 मिनट्स में मल्टीप्लाई विद 60 मिनट्स एंड 1 मिनट के अंदर ये है 60 सेकेंड. तो मैं मल्टीप्लाई विद अगेन सेकेंड. तो ये कन्वर्टेड फ्रॉम आवर्स टू सेकेंड्स. सो दिस कन्वर्जन, सो 1 hour इज बेसिकली इक्वल टू 3600 seconds. Okay, that's how you convert from hours to seconds. So just put in the values, you get your average speed, which is around coming about. Let me just calculate it. It should be in meters per second, and it is making sense कि meter per second में आ रही है. So it's 4 exponent 3. हमजा खेल रहे हैं पे मेरी 2 into 36 minute. So it's coming out to be 0.56 meter per second. ठीक है. That's pretty small, right? But on average, it makes sense कि यार आप सही है इतनी average speed पे आप चल रहे थे throughout the hike. Trek, sorry. And then we have instantaneous speed, right? So this is an example for instantaneous speed. ठीक है. Instantaneous speed. Can anyone explain or give me example of instantaneous speed?
इंस्टेंटेनियस, मैं स्पेलिंग मिस्टेक अगेन। हमजा फिर मुझे बोला था आपकी स्पेलिंग सही नहीं। इंस्टेंटेनियस, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? कैन एनीवन गिव मी एन आइडिया? कि सर ये होती है। तो ये है मल्टी फ्लैश फोटो। व्हाट्स अ मल्टी फ्लैश फोटो? वो आपको आपकी एक ही लेट्स से एक ही फ्रेम की इट टेक्स मल्टीपल पिक्चर्स इन मिली सेकेंड्स, आफ्टर आफ्टर ब्रेक ऑफ मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो गोल्फ का शॉट मारते मारते उसने सारे शॉट पिक्चर्स लिए एक ही बंदे की। सो देन उसने कंबाइन करके यू हैव अ मल्टी फ्लैश फोटो। ठीक है, सो व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड? कैन यू गिव मी एन आइडिया कि इनको क्या आइडिया है इसके बारे में? एनीवन? गिव मी अ गेस, गिव मी अ तुक्का। ओके, कोई बात नहीं। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, इट विल मेक सेंस इन अ वे। लेट्स से अगेन यू आर ड्राइविंग इन बुगाटी, दिस इज बुगाटी ओवर हियर। ठीक है, एंड आप ड्राइव कर रहे हैं एंड आपने ड्राइव करते करते देखा, ठीक है, ऑन योर स्पीडोमीटर कि योर स्पीड एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट इज लेट्स से 1 kph, 110 km/h। ठीक है, so at that instant your speed of the car is 110 km/h. Similarly, let's say this is the golf ball. So जब initially इसने बॉल पे हिट किया, let's say मैं स्पीडोमीटर में लेके बैठा हूँ सामने, and I will measure the speed of the shot at which it was hit. ठीक है, so point A पे बॉल हिट हुई, तो मैं उस पॉइंट पे स्पीड को नोट कर लूंगा। Let's say it came out to be 210 kph, right? So instantaneous speed क्या होती है? It is a speed of an object at a particular instant of time। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। लेट्स से आप जब गाड़ी चला रहे थे बैठ के, आपने गाड़ी चलाते चलाते चेक किया आपने, हाँ मैं स्पीड 110 kph है। सो एट दैट इंस्टेंट इट वाज 110 kph। लेट्स से आपने ब्रेक, आपने जंप, आपने देखा कि आगे जंप है, आगे ब्रेकर है, जंप ब्रेकर है, आपने स्लो डाउन किया, देन इट विल बेसिकली रिड्यूस। लेट्स से आपने व्हेन यू वर स्टार्टिंग, व्हेन यू क्रॉसिंग द जंप, ठीक है, द स्पीड ब्रेकर, लेट्स से आपकी स्पीड देन एट दैट इंस्टेंट वाज 30 kph, राइट? सो at every instant when you see your kilometer speedometer, so every instant में आपको स्पीड दिख रही है at a particular instant of time, that is called instantaneous speed। So at the instant of operating speed क्या है? ठीक है, that is called instantaneous speed। Any questions? Any questions? नहीं सर। मशाक ले रहे? Yes, sir. Okay, good. So now we are talking about velocity, right? So when I talk about velocity, I want to introduce a new concept which is called displacement, right? So what is displacement? तो पहले वो बात कर लेते हैं। This is something in theory which you can read, ठीक है, on your own। I'm going to give you a lecture note, तो वो आप देखते रहें। It will cover everything जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। So let's talk about first thing which is something new to you guys, displacement, right? So what is displacement? ठीक है, so imagine the same example which I gave you in the last slide, couple of slide back। You want to go from point A to point, right? आपने let's say there are two friends, एक दोस्त ने यह रास्ता travel किया and he reached the same point। एक दोस्त ने फिजिक्स पढ़ी हुई थी, he was pretty smart, he took this route। ठीक है, so one friend went using this route, the other friend went using this route। So which one is the smartest one? Let me name it also, The second one. the green one, right? So let's say this is Ali and this is, let's say, Huzefa। ठीक है, so Huzefa is the smartest one, right? So obviously it's the shortest path, it is going to straight towards point A to B। ठीक है, however they are taking it, they are reaching the same destination but the route is pretty different, right? So if I want to now describe displacement, I can describe displacement as the following thing: it is the shortest path, it is the shortest path between, so BW means between, ठीक है, between two points, ठीक है, and it is a vector quantity, right? Why it is a vector quantity? Because displacement always has direction, ठीक है, displacement always has direction। So Huzafa is going from A to B, तो इसका arrow
होगा हमारे पास, तो it would be a basically vector quantity. It would have a certain direction, right? So let's say the displacement of Zappa at a particular time, let's say he reached from A to B. Displacement of Zappa is 50, let's say kilometer. Let's say 50 kilometer is a huge trek. बंदा मर जाएगा. Let me just keep it to 10 kilometer. It's 10 kilometer eastwards. ठीक है, let's say A to B is eastwards. क्या लिख रहा हूँ? Hawkwards लिख रहा हूँ बैठ के. हरी पॉटर मेरे में आ रहा है. ठीक है, eastwards. ठीक है, so it has magnitude, it has a unit, it has a direction. तो displacement is a vector. ठीक है, now let's draw some difference between displacement and distance. ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि दो डिफरेंस क्या है. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सिमिलरिटी प्लस डिफरेंस दोनों लिखते हैं यहाँ पे. ठीक, क्या डिफरेंस. ठीक है, सो दोनों, व्हाट इज डिस्टेंस, इट्स जस्ट द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, राइट. इट हैज just the length, right? Length between two points. You can just keep that last example in your head. And displacement is the shortest path between two points. ठीक है, पॉइंट सही. एंड अच्छा, ये तो पहले पॉइंट ना, ये मैंने टू टू भी कर दिया. देखो मैं बारिश में भीग के ना थोड़ा सा मेरा ब्रेन फ्रीज हो गया. एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. दिस इज प्रीटी इंपॉर्टेंट. This will now describe speed versus velocity in a while. And displacement is a vector quantity. ठीक है, एंड दोनों के ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास. दोनों के ऐसा यूनिट, सिंस बोथ आर लेंथ्स, दोनों के ऐसा यूनिट सेम है, दैट इज मीटर्स. ठीक है, मीटर्स. एम, इसका भी ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास. इसका भी ऐसा यूनिट हमारे पास है, बेसिकली मीटर. ठीक है, इट्स मीटर. ओके, ठीक है जी. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. आई होप इट मेक्स सेंस. नाउ वी गोना शिफ्ट टुवर्ड्स वेलोसिटी. क्या होती है, ठीक है, आपको पता है स्पीड क्या होती है. स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. ठीक है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. पर नाउ शो यू द फॉर्मूला ऑफ स्पीड. स्पीड क्या है हमारे पास. स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. ठीक है, डिस्टेंस क्या है हमारे पास, ये भी स्केलर क्वांटिटी है. टाइम इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी. दैट इज व्हाई स्पीड इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, तो फॉर्मूले के अंदर अगर सारे क्वांटिटी स्केलर हैं, तो द फॉर्मूला, जो क्वांटिटी आप इसके लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं, वो भी स्केलर होती है. ठीक है, अगर एक भी क्वांटिटी वेक्टर होती ना, देन द क्वांटिटी, द स्पीड, लेट्स से इन अ पैरेलल यूनिवर्स, अगर डिस्टेंस वाज, अब डिस्टेंस वाज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वाज स्केलर क्वांटिटी, और उल्टा होता, तो स्पीड वुड हैव बीन अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, तो नाउ लेट्स इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ वेलोसिटी, राइट. तो वेलोसिटी के आइडिया पे जाते हैं बैठ के हम. वेलोसिटी क्या होती है भाई. Velocity is now the rate of change of displacement. ठीक है, velocity, if I just write it down in a single sentence with a few words, it is the rate of change of displacement. Okay, rate of change of displacement. Okay, rate of change of displacement. ठीक है, तो यहाँ पे अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला देखिए बैठ के, क्या है यहाँ पे. वेलोसिटी इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेक. ठीक है, अब वेलोसिटी जो फॉर्मूला है आपके पास, इफ आई राइट इट डाउन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, तो वेलोसिटी ऐसा होगा, एंड आई विल यूज एस बार. ठीक है, बार बिकॉज डिस्प्लेसमेंट है ये, एंड डिवाइड बाय टाइम. टाइम तो दोनों फॉर्मूले में सेम था, स्पीड और वेलोसिटी के. जस्ट द क्वांटिटी ऑन द टॉप ऑन द लिमिट हैज चेंज्ड. तो आई रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट बाय एस बार. ठीक है, अब इसमें क्या है, इफ यू जस्ट नोटिस, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, hence your velocity comes out to be a vector. If any of one of the quantity is vector, the quantity for which the formula is written will also be a vector quantity. ठीक है, so velocity has direction. I gave you example in the scalar versus vector in the start, in the last class. The velocity of the airplane is 160 kph mile per hour eastwards.
तो यूनिट में मैग्नीट्यूड है, यूनिट है और डायरेक्शन, ठीक है। सो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एंड हाउ इज अ वेक्टर क्वांटिटी आप अपने समझ लिया है फ्रॉम द फॉर्मूला, ठीक है। सो नाउ लेट मी जस्ट ड्रॉ सम डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटी बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ताकि आपको अच्छा सा आइडिया हो जाए कि ये क्या है, ठीक है। सो वी हैव स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। सर क्लास कितने बजे एंड होगी? When we started around 10:48, 9:40. So yeah, 10 more minutes. Do you have any other class or you want to go somewhere else? You want to party hard Sunday? Yeah. अच्छा, so बोर हो गए? Yeah. नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा ठीक है, सर बोल रहे हैं, सर फंस गया मैं बोल के। नहीं नहीं, बस टेल गिव मी 10 more minutes. तो स्पीड इज व्हाट? स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। However, velocity is the rate of change of displacement. Okay. The second thing which you should know about speed and velocity, so speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. ठीक है जी, ये आपने देख लिया। And then what is the third thing which you should know about this? कि speed, इसका SI यूनिट क्या होता है हमारे पास speed का? मीटर पर सेकेंड। And numerical wise it's also same as velocity, since दोनों में quantity ऊपर length है, नीचे हमारे पास टाइम है, so it's again मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। और what else can we draw between speed and velocity? अच्छा जी, स्पीड की टाइप्स अगर डिस्कस कर लें बैठ के, स्पीड की टाइप्स अगेन वी हैव एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ठीक है, एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। सिमिलरली इसमें भी वी हैव द टू टाइप्स, इंस्टेंटेनियस स्पीड। सिमिलरली इसके अंदर वी हैव टू टाइप्स, ठीक है, एक तो एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओ वेलोसिटी, सॉरी, कोई नहीं बता रहा कैसे हम गलती कर दी। दैट इज प्रीटी रॉन्ग। आई डू मिस्टेक्स जानबूझ के ताकि आई कैन सी कि कौन जा रहा है। हमजा ने फॉर मैं मैथ बोलने ही वाला था। अब बोलने वाले, जबरदस्त। आई ट्रस्ट हमजा। अच्छा जी, तो ये दो टाइप्स हैं। अगर मैं जस्ट टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी जल्दी से, ताकि आपको आइडिया हो जाए, इट वुड मेक मोर सेंस। But talk about average velocity, it would be same as the last formula which we have seen for the speed. It's average speed. So if you want to find average velocity, that is going to be same as the last thing which you have learned. It's the total displacement on total time, right? As easy as a pie. Okay. And if I want to find again an instantaneous velocity, तो वो क्या होगी? सिमिलरली लेट्स से इफ यू आर फ्लाइंग इन एयरप्लेन, एट द मोमेंट आपने स्पीडोमीटर देखा कि ये वाज फ्लाइंग एट 160 एम माइल पर आवर ईस्ट, ठीक है। एट दैट इंस्टेंट आपकी एरोप्लेन की स्पीड क्या थी? 160 माइल पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। अगेन इट्स द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट at a particular instant of time, at a particular instant of time or a moment of, ठीक है, just talk about some other language. Now the last concept which I want to cover is acceleration. उसके बाद I would give सर you, एक मिनट पिछली वाली स्लाइड पे जाएगा? okay, you can note it down or take a screenshot, बाद में लिख सही है, लो। कर लिया। सही है सर, कर लिया। Yes, Mashal, anything you want to add on? नथिंग टू ऐड ऑन सर। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि अगर क्वेश्चंस क्लास के आखिर में मिल जाया करें होमवर्क के तौर पे तो प्रैक्टिस हो जाएगी।
श्योर। अभी हम बेसिकली अभी हम क्वेश्चंस थ्योरी समझ रहे हैं बैठ के। आपको क्वेश्चंस अभी मैं अच्छे खासे दूंगा, ठीक है। सो आफ्टर दिस चैप्टर एंड्स वी सॉल्विंग टॉपिकल क्वेश्चंस, उसके अंदर वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। सो ये है, सही है। Or let's say I can assign a homework also if you are pretty interested in doing homework. I can assign you book के questions, ठीक है। I was trying to save your time कि we just do the important things and which can build your concepts and directly जो एग्जाम में आता है वो प्रैक्टिस करें आपको। So yeah, I can give you homework। सर एक्चुअली एक्चुअली जो क्वेश्चंस के बगैर मुझे सही समझ में भी नहीं आती मुझे, तो सही प्रैक्टिस है, सही है, क्वेश्चंस अगर होंगे तो वो ठीक है। हो जाएगा आसान। ठीक है, तो मैं आपको आज पीडीएफ भेजता हूँ फॉर चैप्टर 1 चैप्टर 2। आई विल एनोटेट, मैं क्वेश्चन मार्क कर दूंगा उस पीडीएफ के अंदर, जो जो मैंने मार्क किया वो मैं अपना होमवर्क करना होगा, ठीक है, बिफोर द नेक्स्ट क्लास। अरे मेक सेंस। मशाल है हमजा। हमजा आप नाराज तो नहीं हो गए क्या सबने होमवर्क एक्स्ट्रा दे दिया बैठ के? तो वी हैव कंसेंसस ऑन दिस। सर होमवर्क नहीं दिएगा यार। अब तो मिलेगा, ठीक है, बहुत मिलेगा होमवर्क। अच्छा, ओके। No, I will not give you that much homework just to cover all the concepts. I have clear कुछ, ठीक है। So the last thing which I want to discuss is acceleration। उसके बाद we had graphs। तो ग्राफ्स के लिए तो टाइम हमें बचेगा नहीं, बिकॉज अब सबको भागना है, since it's your Sunday you want to have some friends time, family time, ठीक है। सो आप सोचते होंगे सर की फैमिली नहीं है क्या, सर के दोस्त नहीं है, सर पढ़ाते रहते हैं संडे को। नहीं, आई हैव आल्सो अपॉइंटमेंट्स बट वी मीट एट लेटर टाइम ऑफ द नाइट, ठीक है। सब पढ़ाते हैं हमारे दोस्त। तो लेट्स टॉक अबाउट एक्सेलरेशन, राइट। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं, लेट्स अगेन गो बैक टू माय बुगाटी, ठीक है। बुगाटी में थोड़ी पतली हो गई है, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा है। सो अब लेट्स से आपने पॉइंट ए पर आप क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, आप भागते हुए आ रहे हैं, यू आर ड्राइविंग, यू आर क्रूजिंग द कार एट पॉइंट ए। मैंने आपकी स्पीड नोट की, यू इज बेस्ट टू शो इनिशियल स्पीड, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कि यू इज इनिशियल स्पीड ऑफ द कार, इनिशियल स्पीड, ठीक है। एंड एट लेट्स से पॉइंट बी, जब मैंने आपकी स्पीडोमीटर से स्पीड नोट की गाड़ी की, बुगाटी की और बुगाटी, ठीक है, इससे टायर बड़े हो गए, लेट्स से नॉट, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन कार, ठीक है, समथिंग एबनॉर्मल। सो इसमें मैं लेट्स से इट वाज 10 मीटर पर सेकंड, राइट। एंड लेट्स से उसको मैं दे दूं कि T1 वाज 0 सेकंड। इस पॉइंट पे मैंने स्टार्ट किया नोट करना टाइम, स्पीड को, ठीक है। एट दिस पॉइंट बी मेरे फाइनल वेलोसिटी वाज लेट्स से 20 मीटर, and your final time was let's say 2 seconds, ठीक है। So V is your final speed, ठीक है। And what is your T? T is your time taken, ठीक है। अब if I want to define acceleration in a single sentence is basically this is also correct, then write it down, okay, acceleration the change in velocity per unit time, or which I suggest is that acceleration, कैपिटल ए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी मैंने, आई वांट टू ग्रामेटिकली एंड स्पेलिंग मस्ट करेक्ट सिंस आई हैव द जज ओवर हियर, जजेस ओवर हियर। सो एक्सेलरेशन इज द, तो रेट ऑफ चेंज हमने याद कर लिया बैठ के, सो इट्स एवरीथिंग सेम, स्पीड के लिए, वेलोसिटी के लिए, एक्सेलरेशन के लिए, तो इस पोटैटो पराठो, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो आप एक स्टेप बाय स्टेप बढ़े आ रहे हैं। So you can just see the formula over here. It's change in velocity upon time taken. And if I want to write down the formula for this, formula of acceleration, which I'm करेंगे discuss in the next class. So acceleration क्या है हमारे पास? It's change in velocity divided by time taken, ठीक है। And change in velocity क्या है हमारे पास? आपके पास initial speed क्या आती है? Is u. U is your initial speed, ठीक है। And v is your final speed, ठीक है। And t आपको पता है, it's the time, right? तो अब आप हाउ डू यू फाइंड द चेंज, यू जस्ट डू फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। एक्सक्यूज मी, मुझे कॉल आ रही है। Here Hamza is playing on the screen।
Okay, so how do you find the change? You find the change by doing final minus initial, right? So it's going to be v minus u divided by t. ठीक है, this is the formula for acceleration. अच्छा यार, आपको फॉर्मूला याद करने हैं ना, तो इसके लिए we have a technique which is called triangle method, right? तो अगर आपको याद करना है, let's say for the speed, imagine करो कि ये triangle है आपके पास and ये आपके पास है speed, ठीक है? This is your distance, this is your time. So what do you see over here? You see, if you want to find speed, you see कि distance and time are basically up and down, ठीक है? So if they up and down, they want to divide distance upon time, ठीक है? If you see कि if you want to find distance, you can see कि speed and time are left and right, so they are side by side, they are neighbors, so we're going to multiply. If you want to find time, you can see कि speed and distance, the speed and distance and speed are up and down, so we're going to divide, ठीक है? Similarly, you can do this for the velocity. वेलोसिटी आपके यहाँ पे आ गई, डिस्प्लेसमेंट आपकी एस बार होती है, टाइम। तो सिमिलरली फॉर वेलोसिटी इट्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है? यू वांट टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, इट इज वेलोसिटी टाइम्स टाइम। यू वांट टू फाइंड टाइम, इट्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, ठीक है? दैट्स द ट्रायंगल, लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर, द ट्रायंगल, ठीक है? सो नाउ आई जस्ट वांट टू स्टॉप ओवर हियर बिकॉज के बाद uh, ये एग्जांपल जस्ट देख लेते हैं, फिर छुट्टी करते हैं, ठीक है? जस्ट टू यू विजुअलाइज के हाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन, ठीक है? तो आई एम गोइंग टू प्लॉट दिस ग्राफ, ठीक है? आई वांट टू प्लॉट दिस ग्राफ। आपको स्पीड दी हुई है और टाइम दिया हुआ है, ठीक है? तो आपको स्पीड दी हुई है इन मीटर पर सेकंड, आपको टाइम दिया हुआ है इन सेकंड्स, ठीक है? सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक है? तो 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 and it's going to be 30, ठीक है? So I'm going to mark it correctly कि 30 पे पहुंच जाऊँ मैं। I'm going to use a scale of 5, ठीक है? 5, nice. I'm going to use a scale of, let me just clear this out, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि इसको तो its velocity, its speed in meter per second, so it's 5 10 15 20 25 30, while it's 30 25 20 15 10 5. Let's plot the forms. 0 पे 0 है, let me just use another color. 0 पे 0, 1 पे it's 5, 2 पे it's 10, 3 पे it's 15, ठीक है? 4 पे it's 20 here, and 5 पे it's 25 here, then it's coming out to be almost a straight line, right? It's almost a straight line. Imagine कि अगर मेरी drawings बिल्कुल correctly scale होती है तो it would be a straight line, ठीक है? अब let's take 2 points on the line, ठीक है? इस point A और मैंने ये point B ले लिया, ठीक है? Point A के हमारे पास 1,5 है, ठीक है? And point B के हमारे पास it's basically this ना, ये देखिए, this is the y value, this is the x value, and इसकी this is the y value, this is the x value, तुम points निकालना, ठीक है? तो इट्स x ऑलवेज x समा हुआ है, ठीक है? तो पॉइंट बी के हमारे पास इट्स 5,25। सो अभी हम इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी के इफ यू नो स्लोप क्या होता है, इट्स द ग्रेडियंट, राइट? हाउ डू यू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन? इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, राइट? तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, ऑन द y एक्सिस इट्स the velocity, so it's coming out to be change in velocity upon change in time. So what is this formula linking towards? It's acceleration, right? So acceleration क्या होती है? Change in velocity upon change in time. So you can find acceleration from the graph of velocity time graph using the slope, ठीक है? तो slope निकालते हैं बैठ के। So your acceleration coming out to be change in y क्या है हमारे पास? 25 minus 5 by 2 minus 7. What is my change in x? It's 5 minus 1, ठीक है? So what is the acceleration coming out to be? It's 20 upon 4. So it's coming out to be 5 meter per second square. It's positive 5 meter per second square. कि आपकी गाड़ी जो भी है, ट्रॉली और बाइक, it's accelerating with the rate of 5 meter per second square. So if you're given velocity against time graph, so if you find the gradient, what is gradient? It's just change in y upon change in x. Y पे what do we have? Velocity. By x पे what do we have? Time. So change in velocity upon change in time क्या होती है? It's acceleration. Therefore, the slope of the velocity against time graph give you acceleration, right? अच्छा जी, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इन लाइन है, that is pretty much interesting. That is the thing which on which O level students are pretty weak.
That is how to read graphs, how to explain graphs, right? You know how to put the formulas, put in the values, get the answer, get full marks, right? If I ask you, did you भाई ये graph क्या बता रहा है क्वेश्चन के बारे में, you will stuck, right? So now I'm going to talk about some different type of graphs, how to read them, how to understand them, what is going on in the motion. ठीक है, we have speed time graphs, then we have distance line graphs, ठीक है, then we have how do we basically now backtrack. आपके पास अगर acceleration time graph किया हुआ है, आप उससे velocity time graph कैसे बनाएंगे? If you're giving velocity time graph, आप उससे displacement time graph कैसे बनाएंगे? So how do you go back, right? We have also learned that, and then I'm going to test you guys over here. Then I derive some equations, ठीक है? The equation of motion which you're going to use in solving your numericals. We have two questions which we're going to derive today, inshallah, and then a practical question to test you guys, and then some discussion upon free fall motion क्या होता है, some famous experiment of Galileo Galilei, ठीक है, and some surprising results which you will see in a while, and then a homework, ठीक है, and then last thing which we're going to talk about, okay, if let's say you have a tennis ball. I don't have a tennis ball right now, सर but होमवर्क क्या है? अभी होमवर्क तो अभी बाकी है, अभी रुक जाओ, अभी बहुत टाइम है. होमवर्क विल बी दिस, एन एक्सपेरिमेंट, राइट? इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, यू वांट टू आंसर दोस. ओके, सही है. then you have this graph. Let me just imagine कि you have a bottle over here, ठीक है, एक तो पीना. I should not drink, but ये पड़ी हुई थी बैग में मेरे. Let's imagine if I drop this bottle over here. If I take let's say multiple flash photos of this falling motion, ठीक है, let's say after 1 millisecond में इसकी multiple pictures लूँ, so I will have a motion के पहले scenario में यहाँ पे होगी, then फिर यहाँ पे होगी, then it will be over here. So the distance of separation would be increasing, right? So ये ग्राफ इन लोगों ने प्लॉट किया हुआ है. So it's an increasing graph. We will study के what are increasing graphs, what are decreasing graphs, ठीक है, in a while. This is what is planned for today. Hopefully when I finish at least 80% of it today, बाकी remaining will be done in the next class, inshallah. So bear up, ठीक है, take out your copies, calculator, pen and your attention, right? Let's start with the first scenario, which is the speed time graph, right? We have discussed के speed time graphs क्या होते हैं, ठीक है. So let's start. Let me choose an interesting color for you guys. And to keep equality between women and men, I'm gonna choose blue. ठीक है. Now I'm going towards मैं choose them, ठीक है. Okay. So speed time graph, right? So what is speed time graphs? On your x-axis you have time, on your y-axis you have speed, right? And तो ये आपके speed time graph है. So the graph obtained is called a speed time graph. If you plot speed on x-axis, oh sorry, y-axis, and you plot time on x-axis, that is called a speed time graph. So it provides a way of solving motion problem, right? You can define an entire, let's say आपकी कार ने accelerate किया पहले, then आपकी कार is moving with constant speed, then you saw a break, let's say you saw a bump, you slow down your car so उसकी velocity speed decrease हुई, then you basically moved at a constant speed of let's say 10 meter per second, right? So it describes the entire motion of the car of an object using graph. So it's pretty simple to describe using graph, ठीक है. So in figure, let's start with the discussion of different type of graphs now. So in figure 1.2.2, which you can see over here, you see it's a horizontal straight line, right? X y पे speed है, x पे time है. So this is stating कि बस एक गाड़ी है जो basically which is moving at a constant speed, right? That's simple, right? Understandable. So values for the speed of the object at first 1 second can be read from the graph and keeping a table 1.21. So हुआ क्या है, इन लोगों ने let's say एक गाड़ी के अंदर लोगों ने एक सेंसर लगाया, ठीक है, which is noting the speed of the car at every 1 second gap, ठीक है. तो उसने सेंसर ने उनको डेटा भेज दिया on a computer, right, and stored it over here in a tabular form. Then इस डेटा को मैंने प्लॉट कर दिया using Excel or any software. Then I basically obtain this particular beautiful graph which is a constant horizontal line, just stating that throughout this particular time interval, my car was moving with a speed of only 20 meter per second throughout. You can imagine you are driving at highway, but let's say you're learning how to drive it, so you're driving at pretty slow speed. Okay, so now let's start different scenarios, right? So this is scenario number 8. So what is this explaining? Imagine I'm talking about only a car, right? Let me just draw my Bugatti. Okay, so I have told my kids, Mashal and Hamza, I was taught by
professional artist. That was Picasso, right? So now I'm telling the secret to you, Ryan. So keep it a secret, right? So imagine this is a car and every yeah. Okay. So you wanted to say something, Ryan? No. Okay, done. ठीक है. So this is moving in this direction and इसका data सारा record करके हम plot in different graph, right? So up, let's say let me call this car Paro, right? My car name is Paro. Okay, it's the Bugatti model, but I call it Paro. So now Paro is driving, and the data for this Paro is plotted over here. This scenario. So what is this scenario representing? Raise your hands. Who want to speak up first? ये मैं को बता चुका हूँ literally. I just want to reiterate. सर गाड़ी कांस्टेंट स्पीड पे जा रही है. Yeah, ठीक है. So the car is moving at constant speed. This is example of constant speed, right? We have also learned one more thing कि इसका slope क्या बताता है हमारा? So what is the slope का formula? Slope is gradient that is changing y upon changing x, right? And यहाँ पे y पे हमारे पास speed है and x पे हमारे पास time, right? So if I take any 2 points, let's say if I take point A, which is 0, 20, if I take point B, which is 5, 20, right? So इसका changing y क्या आ रहा है? Changing y क्या होगा? That would be 20 minus 20, right? Changing y is 0. ठीक है. So if you have the formula slope का, so if you have numerator upon anything, ठीक है, delta t जो भी है, that would be entirely thing will be 0, right? So your acceleration is 0 at the, ठीक है. So you want to find out two things from this graph. First of all, scenario कौन सा है? Car is moving constant speed, and what is the acceleration of the car at this moment? So it's 0 meter per second, right? Does that make sense? I hope it does, right? If it doesn't, raise your hand or talk out, right? Then we have case number 2. Okay, the similar car which is called Paro is now again is driven at a different condition, right? So now we have this and उसका मैं data को मैंने plot किया, I obtain this beautiful graph. ठीक है. This states के this states the following condition. ठीक है. This was the Paro. Now this became pretty huge. Imagine मेरी Paro बड़ी हो गई, right? It has grown by 2 minutes, right? This is point P, ठीक है, and this is point Q. So at point P, when my car cross point P, तो मेरे पास एक बंदा खड़ा हुआ है speedometer लेके, right? It's noting the speed of my car. So the initial speed is coming out to be 20 meter, right? When it crossed point Q, the final speed came out to be, this is the speed given to you, that is 40 meter per second. And during this interval, P से Q, it took how many seconds? It took 5 seconds, right? This is a scenario which is plotted over here. ठीक है. So up this scenario explaining that my Paro is the name of the car, right? Not some formula or some theorem. Don't say sir ने पढ़ाया था Paro theorem पढ़ाई थी हमने. ठीक है. Just Paro is just a name, right? Hypothetical name of the car. So Paro is moving with uniform increasing speed. Or you can also say K Paro is moving with uniform, not uniform, constant acceleration. Let me focus on this term. Constant acceleration, right? So let me just explain why did I said constant acceleration. Okay. So if I want to find out the acceleration of this graph, again I will take 2 points, right? If you want to find the slope of a straight line, you take just 2 points. Then you apply the formula of slope, that is changing y upon changing it, right? Point P का क्या है हमारे पास? It's 0, 20. What is my point Q? My point Q is 5, 40. You can find the slope. Slope will give you acceleration.
and that is the formula, that is change in velocity upon change in time. That is final velocity minus initial velocity divided by, ठीक है, चेंज निकालना आपको वेलोसिटी का, तो फाइनल वेलोसिटी जब माइनस करेंगे यू गेट द चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड डिवाइड बाय टाइम टेकन, राइट, हाउ मच टाइम इट टुक टू मूव फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। तो आपको सारे पॉइंट्स दिए मैं, तो यू हैव द फाइनल वेलोसिटी दैट इज 40, you have the initial velocity that is 20, and the time taken to move from these 2 points is 5 seconds. So it's 20 upon 5, that is 4 meter per second square. So this acceleration is constant throughout this motion up till 5 seconds. आगे मुझे पता नहीं आगे क्या होता है. Till this graph, this is a scenario that the car is moving with constant acceleration. Does that make sense? Give me a thumbs up or just say yes. जी सर। Okay. Ryan, Yes, sir. Vishal, Yes, sir. but now we have an interesting scenario. It's everything combined now. Okay, I can see a thumbs up also. That's good. So now this is something interesting, right? So इसके अंदर we can see 1, 2, 3, 4, 4 scenarios, right? So I can give you a graph in your exam. Okay, complex graph. I will say, okay, now explain every interval of the graph, right? So we have 4 intervals over here. ठीक है? The first interval is the first interval is OA. The second interval is AB. The third interval is BC. The fourth interval is CD, right? So you want to explain what is happening between OA, what is happening between AB, what is happening between BC, what is happening between CD, right? And you let's say now again we have paro. ठीक है? So we have the condition specified. We're talking about only paro. ठीक है? यहाँ पे तो लोगों ने लेबल किया हुआ है, राइट? आई विल नॉट लेबल द थिंग्स ओवर हियर। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये डिसेलरेशन है, ये कांस्टेंट स्पीड है, ये रेस्ट पर है, ठीक है? So let's try to now explain them in verbal way such that it makes sense to all of you, right? So whenever you're explaining, make sure कि you visualize कि जो आपका बंदा आपके response पढ़ रहा है, he is a layman, right? He doesn't know anything. So you should explain in such a way कि it makes sense to everyone, right? You should not just say कि acceleration. I know it is accelerating, right? How it is accelerating, ठीक है? So let me insert an empty page and let me take this picture and let me decrease the size of this picture so that we have it in mind कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, right? So let's talk about these 4 stages and let's see कि what are we dealing with, right? So let's talk about the first stage, that is OA. ठीक है? So what would you edit over here? कि it is the car is, oh, let me just keep it car. The car is moving with uniform increasing speed, right? Since the speed is increasing uniformly, therefore by using following formula, that acceleration is change in speed divided by change in time. So this comes out to be basically what? Constant, right? मतलब this will give you a single value की 3 meter per second square, 4 meter per second square, ठीक है? Example, you get 4 meter per second square, right? You get a constant value. Constant मतलब एक नंबर आएगा, ठीक है? 4, 3, 5, 6, 7, 8, ठीक है? Therefore the car is moving with constant acceleration. Does that make sense? How are we defining every segment of the graph? जी सर। ठीक है? If it does not, you can stop me over here. I can repeat, right? Okay. So now, similarly, I'm going to duplicate the slide. Not duplicate. I'm going to insert an empty slide.
and let's copy this. Now we have the section AB, right? इस सब हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट? पहले ये वाला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज द सिनेरियो. कांस्टेंट स्पीड वाला पार्ट हम ये लिख चुके हैं ऑलरेडी. दिस इज द सिनेरियो. तो नाउ वी कंबाइंड सिनेरियो. ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट द सेक्शन नंबर 2, that is AB, right? What is happening over here? ठीक है. The car is moving with constant speed, right? Therefore, the car is not accelerating, right? So acceleration is not accelerating. That is, acceleration is 0 meter per second square. Okay. This things this thing this speed is also known as top speed of the car. ठीक है. अब ये टॉप स्पीड का फिनोमेना हमारा आएगा, but remember कि this is called top speed, right? Whenever your velocity is constant, right, this is called the top speed. So imagine you have a paro over here. मैं पारो का मोड खराब हो गया. This is your paro over here. Let's say this is the headlights, right, and this is moving in this direction, right? So this is, let's say, the forward engine force, right, FE, and this is the backward friction force. This is air resistance force, and call it FA, right? So if you recall the Newton's second law, we will discuss this out in dynamics chapter. I'm just basically giving you a taste. ये top speed क्या होती है, right? This top speed. What is this top speed? So you know the Newton's second law formula, Kf equals to ma. यहाँ पे जो force आती है, that is the resultant force, right? And how do you find the resultant force? Basically do vector addition, right? अगर let's say एक force आगे है, एक force पीछे है, तो you do what? You do forward force minus backward force, right? And the remaining force is your resultant force that is actually moving the car, right? So यहाँ पे क्या होता है? In this scenario, when you have constant speed, your FE becomes equals to F, right? Therefore, when you find resultant force, FR, that is FE minus forward force minus backward force, तो ये आ जाती है क्या? 0. सर एफ ई और एफ ए क्या होता है? FE is the engine force जो इंजन प्रोवाइड कर रहा है गाड़ी को मूव करने के लिए. FA is the air resistance force जो एयर को स्टॉप करने के लिए लगा रही है. ठीक है. दिस इज जस्ट क्विक रिवीजन. इस चैप्टर का पार्ट नहीं है. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग ये टॉस यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड कैसे अचीव होती है गाड़ी के अंदर एक. ठीक है. सो नाउ इमेजिन इफ यू हैव दिस फॉर्मूला कि F रिजल्टेंट इक्वल्स टू ma. if this is 0 equals to ma. सो इफ जो भी मास है गाड़ी की 1000 kg 500 kg, इफ यहाँ पे मास मल्टीप्लाई हो रही है वहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, राइट? सो एक्सेलरेशन will again come out to be 0 meter per second, right? That is how practically this part is achieved, constant speed of the part, right? I hope it makes sense. We will discuss it out in detail in dynamics for the next chapter, right? Now we have the next part of the graph, that is deceleration. ये कुछ नया पार्ट है आप लोग की. Deceleration क्या होता है? We know what is acceleration. What is the deceleration? ये थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में. Let me just again drop this picture over here. So now let's discuss about section BC, right? The third section, which is BC. What is happening over here? Right? Imagine the scenario is over here. You have your paro, or if you want to call it a car, you have a car.
and it see the bump on the road, right? Let's say the driver see the bump on the road, and then he applies the brakes, right? Then the driver has a thought, okay, apply the brakes, right? Then he applies the brakes. So what happens at point B, basically, let's say his speed was uh V, right? So initial speed was, let's say, V meter per second. And at this particular point, C, it come to a halt almost. Okay, because bump both it's a pretty huge bump, so you want to slow it down. At this particular point, his final speed becomes 0 meters, right? And it took some time from V to C, that is T. Okay, जो उसने time लिया from moving from V to C. Okay, that is some time taken, right? This is a scenario which is shown over here. Okay, so how do you read this graph now? How would you explain this graph to the user, to the examiner? That is as follows, right? We will do what? K. This section is showing what? The speed is decreasing uniformly, right? And the slope of this section is negative, which is describing what? The driver of the car saw a bump, saw a bump, and applied the brakes. Applied the brakes. So after decelerating, it comes to a halt. It comes to a halt. Halt means stop, right? Spelling में सही कर दूं. It comes to a halt, right? So अब what is the difference between acceleration and deceleration? If you see the formula, acceleration formula क्या होता है? It's final velocity minus initial velocity divided by time, right? So this is the formula, right? ये अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपके final speed initial speed is u, final speed is 0. ठीक है? So it's going to be 0 minus v divided by time. So this answer is going to come out what? Negative, right? This answer is going to come out negative. ठीक है? So if your answer is acceleration equals to some negative number, some negative constant, ठीक है? Let me just write constant. जो भी number आपका 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? So this is stating कि this is called deceleration, right? This is called deceleration, right? So deceleration क्या है? It's just you apply the brakes and car comes to a constant. Your velocity decreases uniformly and it comes to a halt. Therefore, you're decelerating, right? ठीक है? If the examiner asks you कि what is the deceleration of the car, you would write down the answer as, let's say आपका answer is car आ रहा था before, it was coming out to be negative 3 meter per second square. If the examiner asks you what is the deceleration, so you should write your answer like this. Okay, deceleration is 3 meter per second square. तो यहाँ पे negative नहीं आएगा, ठीक है? Because deceleration is itself is saying कि car is slowing down, right? If you write negative with deceleration, so it will say कि it is not decelerating, it is opposite, it is accelerating, right? So if you write कि acceleration equals to negative 3 meter per second square, तो it is stating कि acceleration is negative. It means कि car is slow हो रही है instead of accelerating, right? Does that make sense? The negative का sign difference. Hamza, Mashal, and okay, Mashal. Yes, sir. Okay. This is the section BC over here, and the last section, which is CD, it's pretty simple, as you can all see. Let me insert an empty page again, and let me duplicate this. Control C, Control V. So the last section is pretty easy to observe also. It's just stating कि भाई this is section number CD. So अब what is happening कि bump आ चुका है. The driver has applied the brakes.
and he has stopped the car, right? ठीक है, so this was the pumps over here. इसने गाड़ी यहाँ पे stop कर दी है. Let me just draw the pumps like this. Let's say there was some rain in Karachi, ठीक है? He saw huge water pools and he stopped the car, right? So यहाँ पे हो गया है कि the car, the speed is constant and zero, right? This is stating that this is stating that the car is stationary. That is, it is at rest, right? That is as simple as it can be. This is how you would be defining spinning graph. This pops in your MCQ. This pops in your paper 2 theory questions. Take care. So everywhere you should be able to pretty. You should have very strong grip over here. Right? So how do we explain the graphs? Okay. Uh, any questions? Is it clear? Raise your hand. Thumbs up. Jalili. Yes, sir. Okay, good. Clear. Okay. Ryan. Yes. Okay, good. So this is this let me just check how much time do we have. Time is up. Join the meeting again, okay? With the same link. Everyone, Jali sir. Guys, am I audible? Yes, sir. Okay, okay. Yes, sir. Okay, good. So everyone, let's continue now. So we are done with this huge rigorous example. Okay. So now you can also have this scenario. Okay, I'm going to tell you guys a trick. तो वो आप समझ लें एंड कैसे होता है वो भी समझ लें, right? So these graphs are called increasing graphs, right? If you just pick up your right hand and curve it, right? Right hand while graphs are called increasing graphs. I'm going to explain in a while why. Okay. Just remember these are called increasing graphs. Okay. And if you take out your left hand and curl it out, okay, these are called decreasing graphs, right? Decreasing graphs. ठीक है जी. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे you don't have uniform increasing speed, right? You have non-uniform decreasing, right? Because हर time के interval पे you have different change in speed. Let's say इस point पे कितनी है हमारे पास speed? Let's say this is 17. Let's say this is 16 meter per second. At this point of time, you have what? At this second time interval, you have approximately this point over here. So it's let's say 22, right? So यहाँ पे increment कितना था? It was 16. यहाँ पे increment कितना है? It's 22 minus 16, that is 4, not 4. 4 plus 2, 6. ठीक है? So it's non-uniform, right? Uniform क्या होता है? हर time interval पे let's say 5 meters per second, 5 meters per second बढ़ती जा रही speed. Therefore you will have a straight line, right? Now this is non-uniform. ठीक है? So I hope this part is clear. Okay. So अब what is the scenario explaining? So यहाँ पे if you want to find acceleration, right? First of all, this is example of non-uniform. Non-uniform speed, right? अब यहाँ पे how would you find the acceleration of a speed time graph? You want to find it using the slope, right? And how do you find slope? That is changing y upon changing x. But this formula applies to only straight line, right? Only linear graphs. यहाँ पे you have a non-linear graph. You have a curve. How do you find the slope of a curve? Can anyone tell me? How do you find the slope of a curve?
Hmm. How do you find the slope of a curve? Anyone? किसी को नहीं पता? आप लोग grade 10 या 11 में हो दोनों सारे. So you should be aware by now. Okay, how do you find the slope of a curve? सर मैं तो 9 में हूँ। हाँ, you draw tangents. ठीक है? You draw tangents at different points. Let's say I want to find the slope at this particular point. 1 second में निकालना है slope. मैंने 0 सेकंड पे स्लोप निकालना है. मैंने 2 सेकंड पे स्लोप निकालना है. ठीक है? So I will mark those points and at those points I will draw tangents. Tangents क्या होते हैं? Let's say if you have a curve, you draw a line in such a way. Let's say if I want to find the slope over here, I will draw the line in such a way. ये थोड़ी गंदी हो गई है. Let me draw more slant ताकि clear हो जाए. So I will draw a line in such a way कि it touches at only this point and it passes away, right? So इसका distance approximately इसके distance same हो. ठीक है? That is a tangent, right? Then you take 2 points on the tangent, point A, point B. Then you approximate the graph or the slope. ठीक है? This would be x2 comma y2. This would be x1 comma y1. Then you can apply the formula of slope, that is y2 minus y1 upon x2 minus x1. ठीक है? That is how you find the slope of curve. So एक tangent आप बनाएंगे कहाँ पे? Over here. This would be sort of this. And then let me name इसका आंसर जो slope आएगा, that is m1. Then you find the slope over here at this particular point. This will give you a slope of m2. Then you find the slope over here. Let me change the color ताकि बहुत ज़्यादा mix हो गया. Let me make it now. Let me support equality. Let me choose purple. Let me now एक slope आपने निकाल लिया यहाँ से. ठीक है? This will give you m3, right? So if you just see and check कि अगर आपको याद है, you had multiple, let's say you have multiple lines like this. तो बहुत लाइट हो गया, दिख नहीं रहा. Let's say you have this color and let's say you have. ठीक है? So this is m3, this is m2, slope 2. इसका आंसर स्लोप की वैल्यू m2 है, ये स्लोप की वैल्यू m1 है. So कौन सा वैल्यू सबसे ज्यादा होगी? m1 ज्यादा होगी, m3 ज्यादा होगी, m2 ज्यादा होगी? So the steeper the slope, the steeper the line, तो greater the gradient or lesser the gradient? हम्म, ग्रेटर। ग्रेटर होता है ना, राइट? जितना स्टीपर होगी आपकी लाइन, उतना स्लोप उसका ज्यादा होता है. ठीक है? ज्यादा क्यों होता है? बिकॉज अगर स्टीपर है, इसका चेंज इन वाई, वो फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स होता है ना. स्टीपर मतलब आपका वाई बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. ठीक है? वाई का चेंज बहुत ह्यूज है, राइट? सो इफ यू हैव अ ह्यूज न्यूमरेटर अपॉन अ स्मॉल डिनोमिनेटर, you will have a overall huge answer, right? That is why the steeper the line, the greater the slope. तो उसमें क्या है हमारे पास? m1 is greater than m2 and it is greater than m3. ठीक है? सो स्लोप 3 सबसे कम है, स्लोप 1 सबसे ज्यादा है. ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे if you compare, m1 is the steepest tangent, then m2 is less steeper, m3 is less steeper. ठीक है? And if we go on further, the slope gets what? Less steeper and less steeper. तो यहाँ पे सेम सिनेरियो हमारे पास कंडीशन है कि m1 is greater than m2 is greater than 3. ठीक है? That is stating के the car is moving with an increasing speed. ठीक है? The car is moving with non-uniform decreasing acceleration. Does that make sense? Because आपके slopes की वैल्यू भी और चेंज हो रही है throughout the motion. सर m1 ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन क्यों है? इंक्रीजिंग क्यों नहीं है? डिक्रीज हो रही है ना एक्सेलरेशन. इसका स्लोप m1 is the slope.
So m1 is equals to acceleration, right? So पहले m1 बहुत acceleration बहुत ज्यादा है, फिर m2 हो गई बहुत कम, फिर कम हो रही है, फिर कम हो रही है, फिर कम हो रही है, फिर कम हो रही है। यहाँ पे if you draw another point, if you draw a tangent over here, this would approximately be a horizontal line. तो इसका जो slope होगा m4, that would be change in y upon change in x. ठीक है, that would be approximately equal to 0 upon change in x. That would be equal to 0. So acceleration initially it was great, then it decreased, 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 and became 0. These are called decreasing graphs. Does that make sense? Does that make sense or not? जी सर। मशाल समझ आया? यस सर। Okay, Ryan, good. What about Mashal? Mashal confused. Yeah, a little bit. What is your question, Mashal? क्या समझ नहीं आया? How is the speed decreasing instead of increasing? Can you speak loudly? It should be. So I am saying that how is the speed decreasing instead of increasing? Speed Because decreasing if loudly. the As I wrote, speed. decreasing acceleration, not speed. Decreasing acceleration. Oh, okay, Yeah, speed तो increase हो रही है. The acceleration is decreasing, right? got it. Yeah. तो ये areas क्यों नहीं हो रहा भाई? कोई. Let me write down and write it cleanly and correctly ताकि you can understand acceleration. ठीक है नहीं? So now we have 2-3 minutes. Let's finish this out. यहाँ पे बस this slide. Let me finish this slide and then we will continue in the next round इंशाल्लाह. ठीक है. So distance time graph, right? Now we have finished speed time graphs. We are moving towards now distance time graph. Okay. So any questions till now? No. Okay. I am supposing no questions. So now you have distance time graph, right? So what is a distance time graph? If you have time on your x-axis, if you have distance on your y-axis, okay, this is called a distance time graph. Okay. So an object moving with constant speed covers equal distance in equal time. For example, you can see over here, right? So you have distance which is measured in meters on y-axis. You have time measured in seconds in x-axis, and you can see that her second apart, it is traveling 10 meters, right? Plus 10. Now in the next second, next 10, next one, next second, it covers again more 10 meters. So it became 20, right? Again in next second, which is at 3 seconds, it has traveled 30 meters. That is additional plus 10 meters, right? Again, it has traveled plus 10 meters. So at every second, it is covering what? Uniform 10 meters. So this is called a uniform graph, right? So यहाँ पे अब how would you elaborate and how would you explain the graphs? Similarly, जो हमने जैसे इसको किया हमने स्पीड टाइम को किया हमने किया अभी एनालाइज किया. हमने पहले इसको बताया कि सिनेरियो क्या शो कर रहा है ग्राफ, एंड देन इसका स्लोप की प्रॉपर्टी क्या है, इसका स्लोप क्या देगा हमें. एनीवन टेल मी what would be the slope of distance time graph? If I just let's say मैं इसको slope निकाला, ठीक है, that is change in y upon change in x, and इस पे यहाँ पे y पे we have displacement, right? So change in, sorry, distance, and x पे we have time. So what is this quantity representing? That's pretty simple to answer. What is distance upon time? Speed तो equals to मुश्किल तो नहीं था. distance. या ठीक है, it's speed. ठीक है. तो slope of distance time graph give you speed, right? So यहाँ पे इसका slope will come out to be constant, right? Since it's a straight line. Slope of gradient of a straight line is constant, right? अगर आप let's say you have point A, you have point B, you have point C, you have point D. Let's say if I take a point AB and find out the slope, and if I take point AC, if I find out the slope, if I take point B and D, if I find out the slope again, सबसे आंसर मेरे पास सेम आएगा. That is meaning, that is stating के the slope, the gradient of the straight line is constant. ठीक है. So this will come out to be constant. ठीक है. That is why she is stating के it moves with constant speed, right?
डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ LM/OL इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो लो स्लोप आपको निकाल के बता दिया है। तो स्पीड ऑफ द कार इज 10 मीटर पर सेकेंड यूजिंग दिस ग्राफ, ठीक है। So gradient of distance time by represent speed of an object. This is the main thing which I want to show over here. Okay. Let me just try to now briefly summarize what we have discussed today, ताकि you can make notes. So we had discussed two graphs, right? We had discussed speed time graphs, and we have slightly touched distance time graph, right? And let me just draw a small sketch. ठीक है जी। इसमें हम सर तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर हमें डिस्टेंस ढूंढना तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा ना। जबरदस्त, या दैट इज आफ्टर दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। दैट यू आर गोइंग टुवर्ड्स द राइट ट्रैक। दैट इज व्हाई आई वांटेड टू बिल्ड इन यू गाइस कि हर चीज फॉर्मूले से लिंक हुई हुई है, ठीक है। तो ये ग्राफ भी आप जो पढ़ रहे हो, इट्स डायरेक्टली मेकिंग यूज द फॉर्मूला, राइट। सो इफ यू हैव स्पीड टाइम ग्राफ, यू यूज एक्सेलेरेशन वाला फॉर्मूला, राइट। दैट इज आप स्लोप निकाल लें, दैट इज इक्वल टू v माइनस डी बाई टी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन। So ये formula ऐसे derive हुए हैं कि they have first of all they have been tested experimentally and then they have proven using mathematics, then उसका formula derive हुआ। So the formula now works perfectly fine, ठीक है। ग्राफ ज़्यादा आपको आसानी, if you want to explain the huge entire motion, you can just directly draw one graph instead of writing and proving all the formulas or writing in words के first of all at this time I went at this speed, then I travel this many distances at this speed, so just draw a graph, right? You should be able to understand what is this graph showing, right? That is good, मतलब। तो अच्छा जी, हमने डिस्कस किया कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी स्पीड टाइम ग्राफ gives you acceleration, right? And ठीक है, we have studied it types. How many types do we have? We have unique constant speed time graph, right? We have seen a uniform speed time graph. We have seen a non-uniform speed time graph, and we have seen the combined versions, ठीक है जी। यहाँ पे जो हमने अभी स्टार्ट किया है, वी हैव नो कि ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ, ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ gives you speed, right? And just remember this formula, right? Formula is just information. Acceleration is change in velocity divided by change in time, and your speed is distance upon time, right? And the second thing, we're gonna discuss the types in the next class, inshallah. That is to be discussed, right? TBD. That is going to be the following, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ the slides. We will see these different scenarios at rest, constant speed at rest, and constant speed, and non-uniform speeds over here, ठीक है। And then you're gonna learn how to track back, जो अभी हमने कहा कि सर अगर हम इसका एरिया निकाल लें, अगर हमको मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। जो if you have a rectangle, if you multiply length to breadth with area, right? So वही अगर हम करें तो can we gonna have this thing, right? That is a good takeaway, right? So I will explain the example, then I'm gonna solve this example in the class, and then we're gonna derive these equations. They're pretty simple to derive. And then again, I'm gonna test you guys to solve this question. ठीक है।
देन इट इज सम जनरल डिस्कशन ओवर हियर, सो सारी मैथमेटिक्स यहाँ तक खत्म हो जाएगी। उसके बाद वी हैव सम स्टोरी टेलिंग ओवर हियर, ठीक है, कि फ्री फॉलिंग बॉडीज कैसे लोगों ने प्रूव की थी कि एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी इज कांस्टेंट ऑन एवरी ऑब्जेक्ट, राइट। गैलीलियो गैलीली की स्टोरी है, ही वाज द पर्सन, गैलीलियो गैलीली वाज द पर्सन हु प्रूव्ड कि, अच्छा, before telescopes were invented, before we had cameras, before we had any satellite, so people used to think, okay, let's give you a hint for the future discussion. ये तो हम करेंगे, types we will discuss it out again in the future. Let me give you a taste for the next class कि हम क्या करेंगे discuss in the next class that is following. So let's start with discussing different types of distance time graphs, ठीक है, उसके बाद we will learn how to backtrack, ठीक है, and then I have some test question for you guys. Then we will discuss, define and derive some equation of motion, ठीक है, and then so on, so कुछ discussion होगा acceleration पे, ठीक है, some homework over here. So let's start it out, right? So I believe that you have calculators, you have pen or a pencil and a copy. ठीक है, you should be making notes with me. If I, let's say, if I'm saying something जो मैं लिख नहीं रहा, you should make notes of that, right? अच्छा जी. So let's start and discuss different types of distance time graph, right? ठीक है. So let me choose a color, draw, and let me choose a red color because it's pretty obvious. So we have different sections over here again, ठीक है? So it's a combined scenario of different distance time graph scenarios. इसको हमने combine किया हुआ है. So let me just define the sections, right? So different sections जो available हैं यहाँ पे. By sections I mean के we have OA and we have AB. इसमें हमारे पास distance time graph का pattern change हो रहा है. Then we have BC which is similar to section OA. And then we have CD, right? Imagine कि you have a car, right? Imagine you have a car, right? एंड उसका मैंने अंदर सेंसर लगाया हुआ है, सेंसर से डेटा मैंने पिक करके प्लॉट कर दिया है। सेंसर गिव मी के डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, लेट्स से दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ओ, एंड एट डिफरेंट पॉइंट्स, लेट्स से एट पॉइंट ए मैंने डिस्टेंस नोट नोट करते करते मैंने सारे यहाँ प्लॉट कर दिए। देन एट पॉइंट बी मैंने सारे डिस्टेंस प्लॉट कर दिए ग्राफ के ऊपर एज टाइम चेंज, राइट। सो दिस इज सम सेंसर डेटा विच आई हैव रिसीव्ड एंड उसको मैंने प्लॉट कर दिया, राइट। And I want to analyze it, right? I want to analyze it. Okay, what is happening in this particular section? Okay? So I have the first section that is OA. I have the second section which is AB. I have the third section which is BC. I have the fourth section that is CD. Right? So अब ये sections को हमने discuss करना है डिटेल की गाड़ी के साथ. Let's imagine you're sitting in the car and what is actually happening over there, right? So if you want to hop in and discuss and answer the questions you may. ठीक है, if you have any questions, please speak up or raise your hand, right? Because मैं chat को देख नहीं रहा था. So let's start with section O. ठीक है, I'm going to duplicate the graph ताकि you know के what is which graph are you talking about over. ठीक है, so ये मैंने ग्राफ को डुप्लीकेट करके मैंने प्लेस कर दिया. ओके, ये थोड़ा आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है. So yeah, it's perfect over here. So let's discuss over here what is happening, right? So यहाँ पे what is happening कि the distance is not changing, right? So it was at point O and मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया T0, right? टाइमर स्टार्ट कर दिया and after it reached point A, ठीक है, still it is at the same point, right? So what is happening over here? What is the scenario which you can explain from the graph? Okay, there is no change in distance, right? मतलब from the reference point, from the starting point, the car hasn't moved yet, right? Car is not moving, ठीक है? So we can say therefore the car is at rest. If I talk about the slope, right? What is the slope? If you just take a graph, any graph, this is x-axis, this is y-axis, and let's say this is a line, right? So what is the slope I'm talking about? Slope आप इसका निकालते हैं basically from this formula, that is change in y upon change in x. In this scenario, I have distance on y and time on x-axis.
So the slope is basically distance upon time, right? So what is distance upon time? That is equivalent to what? Speed, right? So since the slope is का constant है, ठीक है, the change in y is zero, right? The change in y, that is the distance, the change in distance is zero. Therefore, from the formula, this slope is equals to change in distance divided by change in time is equals to 0 upon change in time, right? So 0 over anything is basically 0 meter per second. The speed of the car is 0 meter per second. That supports our answer. Okay, the car is at rest. ठीक है? So that's how you answer questions. You want to also use formulas in your analysis, right? कि आपने बता दिया कि इसका slope is giving a speed. Since the slope is coming out to 0, the speed is 0. ठीक है? Therefore जो आपने बताया है कि car is at rest, it proves that fact, right? So that's how you should be answering in the exam or in my test also. Now let me insert another slide, a blank slide over here. Okay, let me duplicate this graph. Now we're talking about the section which is AB, right? तो हम बात कर रहे हैं section AB के बारे में. So कोई बताएगा मेरे को what is happening in section AB? Just from the method which we The have. car is moving at a constant speed Okay, and its distance increase हो रहा है. ठीक है. So why? How can you prove the car is moving at constant speed, Hamza? क्योंकि इसमें ग्रेडियंट भी नहीं, क्या कह सकते हैं, ये स्लोप जा ऊपर हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है. Good. So the car is कैसे moving. करना है? Perfect. The car is moving with constant speed, right? पर मतलब ऐसे एक्सप्लेन करना होता है क्या? हाँ, आपके जो थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, जब व्हेन यू वांट टू बेसिकली आपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया थ्योरी के क्वेश्चन के अंदर, उसके बाद दे आस्क थ्योरेटिकल क्वेश्चन, राइट? देयर माइट बी क्वेश्चन आपको ग्राफ दे दें एंड यू वांट टू एनालाइज द एंटायर ग्राफ, राइट? ये एमसीक्यूज में आ जाता है. एक्सप्लेन कि अभी जो सिनेरियो दिया हुआ है, which scenario is this? Is the constant speed? Is the constant velocity? Is the constant acceleration? Is the car at rest? ठीक है, so you want to analyze the graph. If you don't know what is happening and how do we read and how do we understand the graphs, then you won't be able to answer. ठीक है. ठीक है. The car is at rest, ठीक है, and why the car is moving with constant speed? Why is that? Because equal distance changes in equal interval of time. अच्छा, what do I mean by that? Let's say I make a टाइम. हाँ, distance का table और time का table बनाया मैंने, ठीक है, starting from point A, ठीक है, starting from point A. Let's say इस point पे it was at 5 meters, ठीक है, and this was 3 seconds, right? Let's say at the next second it traveled, let's say 7 meters, right? Let's say at the next second it traveled 9 meters, right? Let's say ये point B आ गया. So at every instant, at every increment of time, it traveled plus 2 meters, right? So her equal interval of time पे it was increasing the distance by 2. So that is why it has a constant slope, right? Then you just want to support by your mathematical equation that slope is equals to change in distance upon change in time, that is equivalent to speed. ठीक है, since the slope is constant, therefore your speed of the car is constant. I hope it makes sense, right? ईशल समझ आया वो? ईशल, जी. आपकी आवाज नहीं आ रही ईशल. हेलो. कैन यू स्पीक अप? आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही हेलो, आवाज आ रही है. है? Yes, I can hear you right now. यस यस, आई कैन अंडरस्टैंड. Okay, ठीक है, good. So now you can see कि section BC is same as section OA, right? दोनों रेस्ट वाले सिनेरियो हैं एंड सेक्शन ए बी इज सेम एज सेक्शन सी डी. सो दोनों पे कैन अप्लाई द सेम एनालिसिस, राइट? सो इफ आई जस्ट राइट डाउन माय लास्ट स्टेटमेंट, ठीक है, आई एम गोइंग टू कॉपी दिस and blank slide. I'm going to and copy the graph over here, not this one, this one. Oh, control C and then move on to the blank slide. So I can write it down over here. Okay,
सेक्शन ओ ए इज इक्वलेंट टू सेक्शन बी सी, मतलब जो भी इसका एनालिसिस है इट्स गोइंग टू बी सेम, जो आपने ओ ए के लिए लिखा है दैट इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम फॉर बी सी, एंड फॉर सेक्शन ए भी जो आपने एनालाइज किया है इज गोइंग टू बी सेम एज सेक्शन सी, राइट, द एनालिसिस, राइट, एंड दिस मीन्स के सिमिलर, राइट, इट्स अ मैथमेटिकल नोटेशन। ओके, so I hope it makes sense, right? So आपने एक ग्राफ को एनालाइज कर, now imagine कि we have a non-uniform graph, ठीक है, by non-uniform what do I mean? If I plot distance and time graph values, ठीक है, let's say मैं values plot कर रहा हूँ, let's say it was initially 0 meter at 0 seconds, right, then at the next second it was 10 meters, let's say not 10 meters, it was let's say around 3 meters, then at the next second it came out to be 7 meters, then at the next second let's say it came out to be around 16 meters, right? So from 0 to 1 second, there was an increment of 3 meters. Then from 3 to 7, there was an increment of 4. And then from 7 to from 2 seconds to 3 seconds, there was an increment of 9, right? So there is a non-uniform increment, right? So that is why this scenario is called of non-constant speed, or you can see it is an example of non-uniform speed. Right, as discussed before, which we had discussed in the last classes, okay, these graphs, if you curve your right hand, so these graphs are called increasing graphs, right, and these graphs are called decreasing graphs. अगर किसी का pattern इस type का है, so they will be called decreasing graphs. I have explained this in detail in the last class. You can revise from the recording, right? Okay, so what is happening over here? If I want to explain to you mathematically कि ये graph increasing graphs क्यों हैं, ठीक है? So let's try to understand that in detail. So let me just take multiple points. Let me take point A. Let me not take this point A. Let me take, let's say ABC I've mentioned. This is point alpha. This is point, let's say if I take this point, this is point beta, and this point is gamma, right? This is alpha. This is equivalent to beta. It's a Greek notation, and this symbol is gamma. अगर आपको याद रखना है कि मैंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है? So how would you find a graph of a non of a curve? You draw tangents, right? You draw tangents. ये मैं आपको discuss कर चुके हैं. If you have taken 9 class की maths भी आपको idea होगा कि यहाँ पे you draw a tangent like this. Should be a straight line. Let me just redraw it again. Right? So rough सा tangent बनेगा. इसके ऊपर you will take 2 points. Point number 1, point number 2, and then apply the formula of the slope. That is, the slope is equal to change in y over change in x, right? And then you will draw a tangent over here at this particular point, then a tangent over here, right? Let me name this slope as m1. Let me name this slope as m2. Let me name the slope. इसका जो आंसर आएगा slope का वो m3, right? If you recall from your basic mathematics and the last classes also, कि if you have multiple scenarios of the graphs, let's say graph ऐसा है, that the graph is like this. It has a slope of m1. It has a slope of m2, right? The steeper the graph, the greater the value of the gradient. मतलब इसकी जो m2 की value होगी would be greater than m1, right? तो यहाँ पे you can see कि what is happening over here. The m1, m2, and m3, right? As soon as you start to go on the right side as the time proceeds, the tangents become sharper, the steeper, right? That is stating that this is an example of increasing graph, right? The slope, its speed is increasing, but at a non-uniform rate, right? So how would you analyze this? Is the speed of the car? Let's imagine I'm talking about a car, right? I'm talking about a Bugatti, Maserati, which I have drawn to you guys from multiple classes. Okay, the speed of the car. Let's say this was point 2. Now let's start with speed of the car is increasing at a non-uniform rate, right?
बिकॉज स्लोप्स की वैल्यू सेम नहीं होगी, दिस वुड बी इंक्रीजिंग, राइट? और यू कैन से कि द कार इज एक्सेलरेटिंग, राइट? सो अब एक्सेलरेटिंग क्यों हो रहा है, राइट? अब लेट मी जस्ट ट्राई टू गिव यू समरी ऑफ व्हाट एवर वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, ठीक है? सो दैट इज थ्रू स्केच. लेट मी जस्ट sketch a graph of displacement time graph. You have distance time graph, let's say, ठीक है? एंड आपको मैंने ये दिया हुआ है कि जो लास्ट एग्जांपल था, इट वाज इंक्रीजिंग ग्राफ, राइट? इफ यू वांट टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सॉरी स्पीड टाइम ग्राफ, कैसे बनाओगे आप? यू विल टेक स्लोप्स एट डिफरेंट पॉइंट, राइट? आप स्लोप इस पे निकालेंगे, पॉइंट ए पे स्लोप निकालेंगे, आप पॉइंट बी पे स्लोप निकालेंगे, आप पॉइंट सी पे स्लोप्स निकालेंगे, राइट? फ्रॉम ड्राइंग टेंजेंट्स. सो दिस वुड गिव यू अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? A constant straight line like this, right? आपने क्या करा? You basically found slope. So slope basically gave you the velocity of at different points, and you have found out that this was point A, this was point B, and this was point C, and you have got the answers. And you can see the speed is increasing at different points of time, right? So इस point पे speed was increasing. At this point speed की value ज़्यादा है, ठीक है? From the point A value, इस point पे speed की value ज़्यादा है, right? Now let's say if you want to sketch acceleration against time graph from this, ठीक है? तो वो कैसे करेंगे आप? That would be done again finding slopes, right? Let me tell you why am I linking with this. Sorry, acceleration time graph. What is speed? Speed is basically change in distance upon change in time, right? And this is equivalent to what? The slope of this graph, right? And how do we find acceleration? It's the change in velocity upon change in time, right? So what is this equivalent to? This graph का again slope, right? And you can see the slope of a straight line is constant. Therefore, its answer is a graph sketch would be constant, right? Constant value of it. So again, you found out the slope and you got the acceleration time graph, right? So this is point A, this is point B, and this is point C, right? So if अच्छा एक क्वेश्चन अब पॉप करेगा आपके दिमाग के अंदर कि we can go from distance time graph to speed time graph, then speed time graph to acceleration time graph. But can I go back? If I have this graph, can I sketch the velocity time graph, speed time graph? ठीक है. If I have speed, can I sketch the distance time graph? ठीक है. So how can I do this? अरे यार एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे किया? हाँ, तो अगेन स्लोप निकाला मिलके. आपने इस ग्राफ का स्लोप निकाला. आप इफ यू रिकॉल फ्रॉम योर बेसिक मैथ्स क्लास, लेट्स से दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस. आपके पास स्ट्रेट लाइन है, and you have multiple points on the straight line. You have point A, you have point B, and you have point B, and you have point C, right? So if you recall from your basic mathematics class, if you use point AB to find the slope, ठीक है, or if you use point BC to find the slope, or if you use point AC to find the slope, you get the same value. Do you agree with this? यस. तो slopes, इसकी समरी क्या है? इसकी वो समरी क्या है कि slope of a straight line is constant, right? तो आपका सबसे आंसर कोई एक आंसर आएगा, दैट वुड बी सी. सी द कांस्टेंट है, सी. तो सी इज बेसिकली दिस वैल्यू, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ की वैल्यू, राइट? हमेशा सबसे लास्ट वाली वैल्यू होगी. तो ये इसकी स्मॉल सी है. इसकी लेट्स से दिस कैन बी 9.81 वैल्यू ग्रेविटी, और लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? जो आपको एक्सेलेरेशन ग्रेविटी दी, राइट? दिस इज द एंटायर मेथड. हाउ डू वी ट्रेस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उससे एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ. क्लियर है हम सब? हम सब इट इज क्लियर? यस सर.
मतलब आपकी आवाज नहीं है मेरे को, तो जोर से बोले थोड़ा। यस। ओके यस ठीक है। अब ना क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ कैन आई गो बैक, राइट? हाउ कैन आई गो बैक? लेट्स से इफ आई हैव स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। सो मैं इससे पहले आपको एक डिस्टेंस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एक्सेलरेशन, राइट? तो वो कर लेते हैं। लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। So let me insert blank slide and tracing back. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ज़्यादातर टीचर मिस करते हैं क्लास के अंदर, राइट? और ये एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं, ये एग्जाम में पूछे आते हैं, पेपर 2 में थ्योरी में। ई ग्राफ दिया हुआ है, इससे आप स्केच करें डिस्टेंस एंड ग्राफ, राइट? तो आप इसमें फंस जाते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स इमेजिन वी हैव दिस ग्राफ गिवन टू अस। मेरी लाइन थोड़ी खराब आ गई। वी हैव दिस ग्राफ ऑफ एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, राइट? एंड दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, राइट? कुछ भी वैल्यू सी बोल दो, ठीक है। ये है टाइम 1, कुछ भी वैल्यू सकती है। आई एम जस्ट गिविंग इट वेरिएबल्स, दिस इज T2, दिस इज T3, ठीक है। सो अब मुझे इससे ट्रेस करना है व्हाट आई वांट टू ट्रेस, आई वांट टू ट्राई बैक टू वेलोसिटी टाइम, राइट? अभी कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ नाउ लेट्स टॉक अबाउट, नाउ लेट्स ट्रैक दिस विद द इक्वेशन, राइट? So what is acceleration का formula? It's change in velocity upon change in time, right? I want to find the change in velocity, ठीक है, कि मेरे subject this is going to be acceleration times the change in time, right? So if you recall, if you just check it out, you have got over here. Let me choose red color. तो T1, ठीक है। तो मुझे ना पहले T1 वैल्यू पे उसकी वैल्यू निकालनी है कि मेरी वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। दिस इज योर डेल्टा टी फ्रॉम द स्टार्ट ओरिजिन, ठीक है। एंड दिस इज योर एक्सेलरेशन की वैल्यू, राइट? सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस, व्हाट डू आई गेट? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट? डज दैट मेक सेंस? एक दफा वापस एक्सप्लेन कर। यस। तो मतलब अगर मुझे वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है एट वैल्यू ऑफ एट पॉइंट ऑफ T1, so I'm going to only find out by just finding area under this rectangle, right? So अब अगर मैं sketch करूँ velocity time ग्राफ, ठीक है। So let me just draw the axis, let me keep the color same ताकि आपको इशू ना हो। सर ने कलर कॉम्बो बंदे इस्तेमाल किए, आप ये ना बोलो। दिस इज स्पीड, दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3, राइट? एंड मैंने इससे एरिया, गो बैक टू द लास्ट स्लाइड, इससे मैंने एरिया निकाल लिया एंड लेट्स से दिस एरिया वाज कमिंग आउट टू बी V1, राइट? सो एरिया 1 में इसको बोल रहा हूँ एरिया 1 है, ठीक है। लेट मी जस्ट चूज रेड कलर ताकि आपको प्रॉब्लम हो। सर मैं एक चीज पूछ लूं। जी पूछें। ये जो ए के आगे एरो है, इसकी हम वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? ए के आगे एरो है कहाँ पर? ये जीरो के लेफ्ट पे। ये बोल रहे हो? ये वाला एरो और उससे दूसरा वाला एरो भी। मैं बस बोल रहा हूँ कि इमेजिन कि आपके पास अगर रेक्टेंगल है एक, ठीक है, उसकी ब्रेथ होती है, उसकी हाइट होती है, राइट? हाउ डू यू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ब्रेथ इनटू हाइट, राइट? तो मैंने इस साइड को बोल दिया दिस साइड इज डेल्टा टी, दिस साइड इज ए। सो हाउ वुड यू फाइंड द एरिया अंडर दिस रेक्टेंगल? इट्स हाइट टाइम्स ब्रेथ, राइट? हाइट यहाँ पे ए है, ब्रेथ यहाँ पे डेल्टा टी है, राइट? सो इट्स ए टाइम्स डेल्टा टी, डेल्टा T1 बोल लो उसको, ठीक है। सो एरिया 1 इज बेसिकली गिव यू अ वैल्यू ऑफ वेलोसिटी 1, उसको मैंने वेरिएबल बोल दिया, ठीक है। सो ये आपने पॉइंट करना है प्लॉट, ठीक है। लेट्स से ये आ गया V1 आपका, दिस गिव यू कांस्टेंट वैल्यू। तो दिस ओरिजिन आपके पास तो जीरो, राइट? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो बिकॉज एट द स्टार्ट इट वुड बी जीरो, राइट? सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ T1 दैट इज कमिंग आउट टू बी दिस वैल्यू, राइट? आपको दो पॉइंट, आपको एक पॉइंट मिल चुका है, राइट? आपको बस एरिया अब T2 पे निकालनी है वैल्यू आपको, और T3 पे निकालनी है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, एंड दिस वुड बी इन मीटर पर सेकंड ऑब्वियसली, राइट? नाउ यू वांट टू फाइंड till T2, right? यहाँ तक, let me just choose this color. What is the value of velocity at T2? So for that you have another triangle, another rectangle, which is basically this yellow region, right?
तो अब आपके पास you have another rectangle for finding the velocity, the speed, the velocity of the car that was this. Let's say this was the car we're talking about. ठीक है, तो अब आपको T2 पे निकालनी इसकी स्पीड कितनी थी, राइट? सो नाउ यू हैव अनदर ट्राइंगल which is the following. Let me just erase this. Now your breadth is changing, right? So आपकी जब breadth rectangle की, now it's delta T2, right? So this, let me name this entire thing as area 2, right? So what is area 2? Again, it's another triangle with breadth of delta T2 and height of A, right? How would you find the area under this curve? That is again A times delta T2. And this would give you again a constant value. आपका एक constant answer आएगा, number आएगा, that is going to be your velocity. ठीक है? And again, now you will go to your graph, you will plot it out over here like this. ठीक है? It's coming out to be V2. ठीक है? Let's see, this is your V2. Okay, so now you have enough points to plot the graph, right? तो आपके पास पॉइंट अच्छे खासे आ चुके हैं. So you can find out T3 also. T3 के लिए क्या करेंगे आप? You will again make another rectangle. ठीक है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही. Am I audible? Ishal and जी. other. जी सर अब आ रही है आवाज. ठीक है, okay. So now I have another rectangle. ठीक है, अब I'm going to choose another highlighter. Let me choose orange one. So now I have this entire rectangle over here. ठीक है, so अब मेरा जो breadth है, the rectangle नया बन रहा है, उसकी जो breadth है, that is going to be now d delta t. ठीक है, so अब मैं इसको नाम दूंगा इस rectangle को, जो orange वाला rectangle है, that is going to be this. This is going to be area 3, right? It has the breadth of delta T3 and a height of 8. So what is my area 3 coming out to be? It's height times base, right? So this is coming out to be, this is going to give me again a constant value, एक number आएगा, that is going to be again a velocity 3, right? So ये आपकी value आ जाएगी यहाँ पे, velocity 3. You can see कि it's coming out to be a straight line, ठीक है? And if I sketch this, this is going to be a straight line. ठीक है, माने कि it's a straight line. मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ इस वैल्यू को. Let me just fix it out. This is V1, right? So this is how you sketch from acceleration to, okay, this is a straight line. ठीक है, this is a straight line. मेरी sketching में थोड़ा सा tilt हो गया. So you know that if you're given a graph of acceleration time graph, that's how you can trace back and create what, this velocity time graph. ठीक है, so again if I give you a summary, of the process, क्या करा हम लोगों ने कि you're given this graph of acceleration time graph, right? This was a constant. तो आपने क्या करा, आपने इसका आपने एट डिफरेंट पॉइंट्स, आपने इसके एरिया निकाले. आपने T1 पे एरिया निकाला, T2 पे एरिया निकाला, T3 पे आपने एरिया निकाला. दिस वाज द वैल्यू ऑफ प्लस a, and you got the graph of velocity time graph, which is coming out to be a straight line, right? And this is T1, and this is T2, and this is T3, right? Now I'm going to give you a homework. ठीक है, your homework is going to be the following, right? So you want to read this slide. ठीक है, एंड आपका प्रोसेस जो मैं यहाँ पे बताया मैंने आपको बता दिया. ठीक है, यू वांट टू बेसिकली रीड दिस. तो होमवर्क इज, वांट टू रीड दिस स्लाइड एंड कंप्लीट the question in the next slide, right? Question in next slide. ठीक है, अब वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि do we have enough time? We have 3 minutes, right? So now the question is, sketch the displacement time graph from the following velocity time graph. ठीक है, अब यू नो द प्रोसेस, यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग अगेन एंड अगेन टू अंडरस्टैंड द आइडिया कैसे करेंगे. सो द क्वेश्चन इज, आपको मैंने ये दिया हुआ है ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, जो हमने अभी फाइंड आउट किया है इन द लास्ट स्लाइड.
ठीक है, it's a straight line. So you're given this graph which is, let me just choose red color. आपको ये ग्राफ मैंने दिया हुआ है. So this is T1, this is T2, and this is T3, right? And at this value you have the value V1. Let me just name this as T1. थोड़ा आगे पीछे हो गया है. This is T1, ठीक है जी. And this is going to be T2, and ये थोड़ा बहुत दूर हो गया. Let me choose this as T3, and this is your T3, right? And this is the value of V3, right? And I'm going to give you one hint so that you cannot be stuck over it for the entire night. The hint is, if you have a triangle like this, and this is the base and this is the height, the area of the triangle is going to be half into base into height, right? So you want to solve this before tomorrow's class, inshallah. This is a pretty simple graph, right? इसके अलावा मुश्किल नहीं हो बताता. सर एक मुझे बताएगा कि अगर हम लोग वो ढूंढ रहे हो, क्या कहते हैं, जो जिस सवाल में आप बताए थे, आप जरा जोर से बोलेंगे, आपकी आवाज बहुत ज्यादा स्टटर हो रही है. हम लोग को रेक्टेंगल का एरिया ढूंढना है ना सवाल में. इस सवाल में व्हाट शेप डू यू सी? ये विच शेप? पे स्लाइड नंबर 35 पे जो है. हाँ, 35, 38 की बोल रहे हो? 5. 35. हाँ, इसमें हमने जो शेप हमें मिल रहा था, दैट वाज द रेक्टेंगल, राइट? सो वी अप्लाइड द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल. मेक सेंस? सो यू जस्ट, व्हाट इज द ट्रिक? जी जी. व्हाट इज द ट्रिक? बेसिकली ट्रिक ये है, इफ यू वांट टू बैक ट्रैक, यू वांट टू फाइंड एरिया अंडर द ग्राफ. ठीक है, सो एरिया अंडर दिस ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ इज गोइंग टू गिव यू द स्पीड टाइम ग्राफ. ठीक है, अब आपने क्या करना है? अब लेट मी जस्ट गिव यू अ हिंट आल्सो, हिंट नंबर 2, के नोट एरिया अंडर velocity time graph will give you displacement time graph, राइट? अब मैं इससे ज़्यादा बताया था, मैं आपको हिंट दिया ये वाला और ये वाला हिंट दिया है. कैन आस्क मोर क्वेश्चंस इन द ग्रुप. यू आल्सो हैव अ टीचर असिस्टेंट, टीए मैंने हायर किया हुआ आप लोगों के लिए. जो भी क्वेरीज आपकी अगेन, सो आई वाज सेइंग कि जो भी क्वेरीज आपकी होंगी आप पोस्ट कर दीजिएगा. यू हैव योर टीए एंड आल्सो मी. आई गेस दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट होमवर्क. अच्छा जी, लेट्स सर प्रोसीड. ये जो एस टी है ये वो है ना एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. एस टी इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. ये वाला कौन सा ग्राफ था? एस टी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, ठीक है. इसकी एक एग्जांपल दिखाएंगे कौन सा वाला था? एस टी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. ठीक है, ओके. सो अब since you already given the homework for the same scenario, right? So you can just skip this, right? This is the same question जो मैं आपको last time दिया, ये अलग है, ठीक है? Same scenario. Okay. So now let's start deriving the equation, right? Let's start deriving the equations. तो अब equation of motion क्या होती है? Can anyone tell me कि what is the equation of motion? What do I mean by equations of motion? G. Anyone? Anyone daring enough participate and speak up in the class? ठीक है, let's say this is the starting point and this is the ending point. It has initial velocity at this point, ठीक है, and at this point has a final velocity v. It took time t,
to travel from O to A, and it is traveling at a acceleration of A, right? So up आपको you have first equation which is you can use this to solve. Let's say आपको final velocity दी हुई है, ठीक है? You're given this, you're given the time, you are given the acceleration, right? You can find out this thing, right? So you need a equation to basically find out any one of the unknown, right? So if we have four variables over here, first of all, let me define the variables. So what is u? U is the initial speed of the car. It's the initial speed of the car. Your v is your final speed of the car. And what is the time? What is t? It's the time taken. And what is accelerate? A is your acceleration, right? Of the car. So let's derive this equation, right? ये कैसे equation आई, ठीक है? If you recall from your past life, right, which we have studied, what is acceleration? Is change in velocity upon time, right? And change velocity क्या होती है? Final velocity minus initial velocity upon time. ये हम देख चुके हैं पहले, right? So now let me insert an empty slide. ठीक है? So you have this equation in hand, that is acceleration equals to v minus u divided by time. So let me just make v subject, right? पहले यहाँ पे t divide हो रहा है, वहां जाके multiply हो जाएगा, it's going to be at equals to v minus u. And I want to make v subject, I'm going to send this u over there, so therefore it's going to be v equals to u plus at, right? That's how this equation has been derived. So it's just a derivative method or another representation of the acceleration equation using this, right? Which is v equals to u plus at. इसमें u is initial speed है, v is final speed, and t is your time taken, and a is your acceleration, right? Now we have the second equation of motion, which is here, ठीक है? So this is also an important derivative equation, ठीक है? This will be applicable in some of your questions, right? Or many. So let's derive it out, right? So again, आपके पास speed time graph है, right? आपके पास speed time graph है, and you want to find the displacement, ठीक है? So how do you find displacement from speed time graph? Let's say if you're given this graph of displacement time graph, let's say if you want to find, sorry, मैंने इसको speed variable का नाम बदल दूँ, speed का is v, ठीक है? So it's speed time graph, you want to find what displacement time graph. Again, you want to find what? You want to find area under the graph, right? If you find area under the graph, you will get your speed time graph, displacement time graph, right? That is going to be something sort of this, right? तो ये आपका जो क्वेश्चन में होमवर्क दिया है, उसका आंसर शुड लुक लाइक दिस, ठीक है? Okay, so let's see, okay, what shape is this? Have you seen this shape before? इसका नाम क्या होता है शेप का? जी, what shape is this? This is 90, this is 90. Yes, anyone? What is the name of this shape? हेलो, आप सब माशाल्लाह से क्लास 10 या 11 में, right? It's a trapezium, right? It has a parallel side P1, it has a parallel side P2, and it has a certain height, right? So it's this shape is called a trapezium. And how do you find area of a trapezium? It's basically half into sum of parallel sides into the height, right? I hope it makes sense. सबको ये formula याद है? Raise your hand, give me a thumbs up if everyone remember the formula. मशाल, रयान, हमजा, यार याद है मुझे। याद है, ठीक है? तो याद क्यों नहीं आया आपको उससे पहले? मशाल, याद आया या भूल गई? भूल गए। ओके,
ठीक है, भूल गए थे, याद कर लें आप, ठीक है। सो इफ यू जस्ट सी दिस पिक्चर केयरफुली, राइट, दिस इज, लेट मी जस्ट, दिस इज द इनिशियल स्पीड, राइट, बिकॉज इस स्पीड से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द इनिशियल स्पीड u, and this is the final speed which it has reached at time equals to 5, right? And this is the time it took, right? ठीक है जी। So just simply apply the formula of area under trapezium, you will get this equation, right? That is as simple as it is, ठीक है जी। So let me just choose a, you can say a equality color, ताकि you don't judge me, I only use dark colors, right? So what is displacement is going to be the area under this trapezium, right? Area under trapezium. I know कि it's difficult, थोड़ा नई concept grasp कर रहे हैं। Okay, you have the recordings, please watch them again and again। जहाँ queries हो मुझसे वापस पूछे, ठीक है। So this is half into sum of parallel sides। Parallel sides, ये दो parallel sides हैं, ठीक है। So it's going to be u plus v and the height, right? The height क्या है यहाँ पे? Height is your t। And if you simplify it further, it's going to be u plus v divided by 2 into t, right? And therefore you have reached your second equation, therefore shown, right? And you have proven the equation कैसा है। I hope it makes sense। If it makes sense, give me a thumbs up। If it does not, I will repeat again। सर मुझे ये तो समझ आ गया जो आप अभी बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ आया कि ये स्पीड टाइम ग्राफ का डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कैसे बदलते थे, मैं भूल गया। ये कर्व कैसे आता था? ये कर्व कैसा आता था, ठीक है, ये आपका होमवर्क है ना। तभी तो मैं छोड़ा है मैंने। दिस इज होमवर्क, राइट? यू वांट, इफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। नहीं सर, किस पॉइंट पे हम कर्व करते थे मैं भूल गया, आपने शायद बताया था मुझे ये कर्व इज ऊपर। इंक्रीजिंग ग्राफ। अगर इफ यू गेट अ कर्व, इट मींस कि ग्राफ, दैट ग्राफ इज कॉल्ड एन इंक्रीजिंग ग्राफ, राइट। ये मैंने इसी एग्जांपल को सॉल्व करा है, ठीक है। मैं, हम लोग यहाँ से यहाँ पे आ चुके हैं, आपको यहाँ से यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो यू शुड गेट दिस शेप, इंक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। ये कैसे करेंगे यहाँ, उससे कर्व पे कैसे जाएंगे? ये अच्छा, तो नहीं कैसे बताया। करेंगे इसके लिए मैं आपको दे देता हूँ वैल्यू, राइट। तो टू बी मोर स्पेसिफिक, इफ यू वांट टू बी मोर स्पेसिफिक, यू कैन सॉल्व दिस एग्जांपल, राइट। आपके पास इसमें वैल्यूज भी हैं, ठीक है, हर पॉइंट की। सो इंस्टेड ऑफ दिस, यू कैन सॉल्व दिस, राइट। इसी ग्राफ को आप सॉल्व करें ताकि इसके अंदर वैल्यूज हैं, यू कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर, राइट। तो पीछे वाले क्वेश्चन को आप भूल जाएं। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल डू दिस। जस्ट सॉल्व दिस एग्जांपल। इसमें आई कैन टेक मल्टीपल पॉइंट्स। आई वांट जस्ट टेक दीज पॉइंट्स, मैं जब मार्क कर रहा हूँ, should take point P in consideration। You should take this point in consideration, this point B, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए, इस पे वैल्यू आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स है 0,20। दिस इज पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट्स इज 2,28, ठीक है। एंड दिस टेक, दिस इज योर T1, this is your T2, and take this point, ठीक है जी। सही है सर, मैं समझ गया, लेकिन अगर किसी सवाल में वैल्यूज नहीं दी हुई हो तो हम अपनी तरफ से कर्व बनाते लाइन के वो हिसाब से। स्केच बोलेंगे आपको ना, स्केच बोलेंगे। तो अगर आपको आइडिया है कि हाउ डू बी ट्रैक बैक एंड ट्रेंड क्या होगा क्वेश्चंस का, सो स्केच में यू जस्ट नीड टू गिव योर स्केच, नॉट वैल्यूज। मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि यू हैव वैल्यूज, यू कैन प्रूव योर आंसर कि आपका आंसर ठीक है, ठीक है। सही है। नाउ यू हैव योर सही कोऑर्डिनेट्स, आप आराम से निकाल सकते हैं इसके एरिया, ठीक है। है। जी सही है। आप ये भेज रहे हैं ग्रुप पे होमवर्क? हाँ, अभी मैं ग्रुप पे भेजूंगा। नाउ आपका शेप ट्रायंगल नहीं होगा, इट्स गोइंग टू बी ट्रेपेजियम, राइट। तो मैं इसका हिंट चेंज कर देता हूँ ताकि यू कैन प्रूव योर कॉन्सेप्ट्स के जो सर ने बताया वो सही बताया, राइट। लेट मी जस्ट सेव इट आउट फर्स्ट। सेविंग में थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज मैंने बहुत आ, सारी
यूज कर वो लीजिए। होमवर्क करके आपको भेजना है ना, वो पीडीएफ के तौर पे। PDF इन द ग्रुप, राइट? लेट मी गिव यू हिंट, इसका हिंट मैं आपको अपडेट कर देता हूँ ताकि ग्राफ, ग्राफ बनाना है या फिर आप बनाना है ना? सारी वर्किंग दिखानी, ग्राफ स्केच करना है इसको तो। सही ये है। है ना, ये तो बराबर ये, ठीक है। So if you have parallel side P1, if you have a parallel side P2, if you have something height, so इसका एरिया जो निकालते हैं और किसी को फॉर्मूला याद नहीं है, that is half into P1 plus P2 into height, right? Okay, I hope it makes sense. Okay, so let's move on, and we have 10 more minutes. Yes, yes, we have 10 more minutes. So आपके लिए एक ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन मैंने रेडी किया हुआ है, and I believe कि you are all ready to solve the questions, right? So क्या है क्वेश्चन? लेट मी जस्ट टेक यू ओवर देयर। हमने डिराइव कर ली है इक्वेशंस, अब जल्दी से क्वेश्चन हम सॉल्व करें। ठीक है, यू हैव टू इक्वेशन इन योर हैंड्स। The first equation is b equals to u plus at. The second equation is s equals to u plus v divided by 2 times t, right? इसमें आपके पास वेरिएबल्स की क्या है? u is your initial speed and v is your final speed and t is your time taken, a is your acceleration and s is your distance, or you can say displacement. You have, first of all, whenever you solve a question, you should list out क्या वो given क्या है. It starts from rest, right? So initial speed is 0 and acceleration आपको दी हुई है. It's 1 meter per second square. You're given the time also. It's 20 seconds. You want to find the final speed and the distance she travel, right? So you want to find out what? You want to find out S क्या है? You want to find out V क्या है? Right? So I guess now it's pretty simple to solve. सही, जो स्पीड का फॉर्मूला है इस पे u माइनस वी है, ये u प्लस वी है। प्लस है, ये आपको माइनस दिख रहा है हमजा? ये प्लस है तो मेरा आंसर तो बहुत ज्यादा आ रहा है स्पीड में। बट ट्रस्ट योर सेल्फ, जो भी आंसर आ रहा है मुझे बता दें। The what is the final speed? What is your distance traveled? मेरी, मैंने अभी तक सिर्फ स्पीड निकाली, मेरी 2110 आ रही है मीटर पर सेकंड। 2.10, 2.1 आ रही है या फिर 2 पॉइंट समथिंग आ रही है? else 210 आ रही है, पता नहीं क्यों। 210 आ रही है, ओके, ये ज्यादा है। बट यही तो कह रहा हूँ। थिंक क्या गलती किया? Anyone else who has solved the question? सर आई हैव सॉल्व्ड। मेरी स्पीड आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड Okay, और डिस्टेंस 10 मीटर्स। good. So मशाल का आंसर आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड and distance is 10 meters. ठीक है, I guess everyone is done now, so I can start. ठीक है, let me just choose for, let's first of all find the final speed, right? तो स्पीड का फॉर्मूला आपको डायरेक्टली पता है, इट्स u plus at, राइट? So everything is written over here. Data मैं सारा list out कर दिया था. Just put in the value, right? So v equals to 0 plus acceleration is 1, time is 20. So it's going to be basically 20 meter per second. ठीक है, so your final speed is 20 meter per second.
हमजा आपने क्या करा था? Let's solve for part B. We want to find with the distance traveled here. So your distance the formula is u plus v divided by 2 times t, right? And you know the initial speed is 0, final speed आप निकाल चुके हैं, that is 20 meter per second, and you is going to divide by 2 and time taken is 20. ठीक है? So it's coming out to be 20 upon 2 times 20. So 2 ones are 2 tens are, so your distance traveled by the cyclist is 200 meters, right? And that is your answer. That's how you should do your working, that every step is crystal clear to the examiner, and it gives you full marks. Take it. Okay, so any questions till this particular point? If not, raise your thumbs. Give me a thumbs up. ठीक है, हमजा को क्लियर नहीं है. It's clear to Ryan, it's clear to Mashal. What about Hamza? Hamza, yes, clear है? No. Should I explain something over here? सर आपका स्पीड क्या आ रही है? It's 20 meter per second. मेरी 21 आ रही है. 21 क्यों आ रही है? इनिशियल स्पीड 0 है. ओह सही है, फिर 20 आ रही है. ठीक है, तो बंद कहाँ से आ गया भाई? ओके, तो let's start. Let's move on. अच्छा जी, अब इंटरेस्टिंग डिस्कशन है. दिस वाज गोइंग टू बी लास्ट डिस्कशन फॉर टुडे, एंड इसके बाद you have a homework. This is going to be discussed in the next class because we don't have enough time, right? अच्छा जी, so हुआ क्या कि falling bodies, right? So in air, a coin falls faster than a small piece of paper, right? I'm going to skim through the content and then explain क्या हो क्या रहा है. In a vacuum, they fall at the same rate as maybe shown in operator figure 1.2.6. देखते हैं. So what is happening over here, right? So this was the famous experiment of Galileo Galilei. ठीक है, Galileo Galilei ने भाई ने बताया कि सन हमारे सेंटर में है, नॉट द अर्थ. जो आप स्टोरी सुन के बोर हो गए थे हमजा भाई. हाँ, दिस इज अनदर फेमस एक्सपेरिमेंट ऑफ Galileo Galilei. ठीक है, so this is the Lean Tower of Pisa. Right? It's pretty famous. It's still standing like this. It's the Lean Tower of Pisa. ठीक है, तो हुआ क्या था? गैलीलियो सर इसके बाद, गैलीली सर ये जब आप पढ़ाते तो मुझे वो दिखा देगा कि आपका डिस्टेंस क्या है. ठीक है, श्योर. सो गैलीलियो गैलीली went to the top, and at that time it was 18th century. There was no mobile phone, no camera. So he called all the people, and people all stood over here, right? They all stood over here to watch his famous experiment. What was the experiment? He took a small cannonball. Let me choose another color. He chooses he chose basically two cannonballs. One was a small cannonball and one was a huge cannonball, right? ठीक है, he dropped them at the same time. ठीक है, this is cannon 1 C1, this is cannon 2 C2, right? And he asked the question to the audience, which cannon ball would touch the ground first? Yes, what do you think, Mashal, Hamza and Ryan? So which cannonball, the bigger one or the smaller one, which would touch the ground first? Sir, I think both of them would touch at the same time. Okay, Ryan says is that both of them will touch at the same time. What about Hamza? स्मॉलर वन पहले जाएगी. Hmm? शायद स्मॉलर वन Okay, जो so वो है कैनन बॉल. what about Mashal? सेम है, छोटी वाली पहले जाएगी शायद. So you support Hamza, right, Mashal? यस सर. Okay, ठीक है, सही है. So the answer is, and he proves to the entire world. What was the answer? They
would touch at the same time. ठीक है, अभी क्यों है? दिस इज योर स्मॉल कैनन बॉल C1, दिस इज योर बिग कैनन बॉल C2, राइट? दोनों को बेसिकली क्या फोर्स नीचे लेके आ रही है? ग्रेविटी, राइट? ग्रेविटी, राइट? एंड रयान वन द गेम, ठीक है, रयान इज सेलिब्रेटिंग ओवर हियर. सो दोनों पे ग्रेविटी लगती है, राइट? एंड इज ग्रेविटी कांस्टेंट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द एंटायर अर्थ? यस, ठीक है. एंड व्हाट इज द वैल्यू ग्रेविटी? दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेट? अगर आपको याद हो, वेट होता है मास टाइम ग्रेविटी, राइट? If you want to find gravity, that is going to be weight upon mass. ठीक है? So despite the shape, despite the size of the objects, this value is going to be constant, right? And since acceleration is constant, they're going to touch the ground at the same time. ठीक है? And इस पे air resistance का effect तो ज़्यादा होता नहीं है, because on spherical objects, ठीक है? On spherical objects, air resistance becomes negligible, right? Does that make sense to you guys? नहीं समझ आया? Does that make sense or not? मशाल है हमजा? जी नहीं सर, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अच्छा, कंफ्यूजिंग है, ओके. उसके लिए आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू गाइस. गिव मी सम मिनट. जस्ट अ मिनट, आई एम गोइंग टू शो यू, मेक यू वॉच अ वीडियो. इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग. सो लेट मी ओपन दैट. ओके, वॉच दिस वीडियो केयरफुली. This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft. So what is vacuum? Vacuum is basically यहाँ पे इन लोगों ने air पूरी extract कर ली है. If you go to outer space, there is vacuum, there is no air, right? So अब यहाँ पे ये लोग देखो ना, make an apple and a feather, pigeon's feather fall at from the same height. And what do you think? Which one would fall first, apple or a feather? Which one would touch the ground first, apple या फिर कबूतर का पंख? Both of them at the same time. Okay, both of them. बोथ ऑफ देम। Okay, what about सर Hamza? आपने बता दिया पहले, ठीक है. दोनों साथ में है। अगर आप ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करें इन एयर, तो फेदर विल बेसिकली कम डाउन स्लोली बिकॉज एयर इज स्लो होगा. पर अगर वैक्यूम नहीं है, अगर सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रही है दोनों ऑब्जेक्ट्स पे, समथिंग मिरेकुलस हैपेंस. So it's covered by BBC. It has 23 million views, right? It was an experiment done intentionally to prove Galileo Galilei's point. And it's kind of got an eccentric construction, which is part of its history. It was built in the 1960s as a nuclear test facility to test nuclear propulsion systems. And that meant that they built it out of aluminium to make the radiation easier to deal with. Aluminium is not the best thing, the strongest material to build a vacuum chamber out of. So they built an outer concrete skin, which is part radiation shielding and part an external pressure vessel. So this thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outside. So this is the film experiment which he showed to the entire audience physically using cannonballs. Now it has been proven experimentally in a chamber of vacuum. ठीक है, USA में prove हो चुका है. So अगर आप feather को अभी ball से देखें तो feather would slow down just because of air rays, right? If you remove and just produce a vacuum, coin and a piece of paper would come at the same time. ठीक है. So that's the beauty of physics, right? So whatever you learn, whatever you see, whatever I teach you, ठीक है,
whatever gibberish you see कि physics book में लिखा हुआ है, it's all true, right? We have observed them physically. Okay, every theory which you learn in physics has been tested also, right? So this is your homework. So you want to also complete this question as a homework assignment, right? So these two homeworks are both due before tomorrow's कब सबमिट करना है? before tomorrow's class. ठीक है, can do it right now or just before the class, right? But submission before the class सबकी हो. So any questions in today's lecture up till now? Should I repeat something? If not, if everything is clear, give me a thumbs up. So this was supposed to be done. Let's discuss it out quickly. तो क्या है इसमें? Let me just rub it out. Okay. And insert an empty slide, right? So let me duplicate this figure over there. Okay. So I'm going to label some points over here. जरा गौर से देखें कैसे कर रहा हूँ mark. So I did label some points in the question before. Yeah, I labeled these points, right? So let me take a screenshot of this. This would be helpful in solving this question. इसकी जगह मैं इसको paste कर देता हूँ. So it is pretty simple. You want to sketch the displacement distance time graph from speed time graph, right? You want to sketch distance time graph from the speed time graph. राइट. अब अगर मैं आपको फॉर्मूले से बताऊं कि हम कैसे करेंगे इसको. सो इफ यू रिकॉल द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. If you want to find distance, that is going to be speed times time, right? So distance from the speed time graph is simply area under the curve, right? Area under the graph. ठीक है, मैं आपको पॉइंट्स दिए थे, मल्टीपल्स T1, T2, T3. So let's consider this first shape over here, which is this one, right? So since it starts from this particular point, and displacement in the start should be 0 because the object starts from reference point, right? Let's say this is your car over here. ठीक है, इसका plot हमने किया हुआ speed time graph over here. So it starts from a reference point O, right? So initially जब start कर रहे तो obviously distance ने travel 0 किया हुआ, right? So let me just mark these regions. This is area region AB. This is region BC, right? So at T1, obviously when your T is basically 0, the distance should be 0, right? Because it starts from reference point. सही है नहीं? तो ये पॉइंट आपका पहला पॉइंट आ गया और द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दैट इज 0, दैट इज योर पॉइंट A bar. So let's talk about at T2. What is happening at T2? So at T2 you have a specific shape which is a trapezium, right? If I draw it correctly and neatly, this comes out to be a trapezium, right? इसकी जो perpendicular side है that is 20, this is 20, and this point जिसकी height है जो this height I'm talking about, ठीक है, this one is 20 and this one is 28, right? This height is 28 and the distance, the height of this trapezium is basically 2 seconds, right? यहाँ से यहाँ तक AB the region है, that is 2 seconds. Label it 2. So you want to find out the area, basically displacement at T2 will be area under this graph of trapezium, right? इसका formula होता है half into sum of parallel sides into basically the height, right? 2. This 2 and 2 cancels out. So your displacement at T2 is 20 plus 28 is 48 meter, right? So your second point B bar is going to be at 2 seconds, it is at 48, right? So now let's solve it out at T3.
Okay, so T3 where I have this entire trapezium. Let me choose this color. I have this entire trapezium, right? This one. This bigger one trapezium. Okay, let me just draw the shape over here. So it's again this. The height of this is still 20. And this is point A, this is point C. The height of this is 30 split. ये point मैंने आपको label कर दिया था. And the length of this trapezium, the height of the trapezium of the blue one is going to be 4 seconds, right? It's 4. So this is 4. Again, apply the formula of trapezium. So displacement at T3 would be area of trapezium half into sum of parallel sides, 20 plus 36 into the height of this trapezium, that is 4. So 2 ones are 2 twos are. The displacement at T3 is going to be 20 plus 36 times 2. So it's 112 meters. So your third point for plotting is coming out to be point C bar. That is a 4 seconds, it is at 112 meters, right? So now you simply plot this and you can possess your displacement time graph, distance time graph. So let me insert the axis over here. This is T in seconds. This is distance in meters, right? This is the origin over here. And let me mark the seconds, the times. So 1, 2, 3, 4, 5, 7. Right, this is 1 second, this is 2 seconds, this is 3 seconds, this is 4 seconds, this is 5 seconds. So 1, 2, 3, 4, 5. So your maximum displacement is coming out to be 112. So let's use a scale of 20. So it's going to be 20, 40, 60, 80, 100, 120, right? So it's 20, 40, 60, 80, 100, and 120. So we have 3 points to plot over here. The first point is A bar, ठीक है, जो आप निकाल चुके हैं, that is coming out to be 0, 0. The distance graph starts from 0, 0. So you have your third point, then you have your second point, and then third point, right? Second point is your 2, 48, and your third point is 4, 1. Simply plot these 3 points on the graph and create a sketch, right? That's it. So your first point is this. This is your A bar. And your second point is 2, 48. So 48, this is 50. 40 would be around this. Okay. This would be around approximately here. This is point B bar. And at 4 seconds, it travels at goes to 112. That is this point, right? So at 4, it's going to be sort of 112. So you can see it's going to be sort of, let me just fix my point. 2, 48 would be this around here, right? So it's going to be sort of this trend. ठीक है, it's going to be a curve. मेरे scaling ठीक नहीं है मैंने. Going to be a curve, right? Let me just fix it again. This is going to be this point. Point B bar. And this is 112. ठीक है जी. So it's going to be sort of, ठीक है, it's not a straight line, it's a curve over here. ठीक है, मैं यहाँ से फिक्स कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए. Right, so it's going to be increasing curve, right? मैंने यहाँ की एक्सेस थोड़ी बड़ी कर दी है बहुत ज़्यादा. That is why it's coming out to be sort of a straight line वाला trend. ठीक है, so it's going to be a increasing curve. ठीक है. So if I summarize this, what was the basically plan to show you guys? If we have acceleration time graph, which is a constant line, if you find area under the curve, right, you will find the speed time graph, which is going to be a straight line.
ठीक है. And if you find the area of this again, this speed time graph, you will end up with this distance time graph. That is going to be an increasing time rate like this. ठीक है. That's how you backtrack. Now any questions? Is it clear? Sir, can you move to the previous slide, 41 slide? I Okay. just wanted to ask that when you're using the formula 1 upon 2 P1 plus P2 and then multiplied by height. So what would be the height P? Uh, एक मिनट रुकिए जरा, ये मेरा PowerPoint is on some drugs. Let me fix this. Distance. हाँ जी, तो आप बोल रहे हैं कि फॉर्मूले में ये हाइट क्या है इन दिस फॉर्मूला, हाँ राइट? जी, फॉर्मूला में जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हाइट से, वो हाइट कौन क्या होगी? हाँ, this is the height. This is the height. If I just show you over here, so let me just insert a blank slide. So if you recall it from your basic maths class, तो आपने trapezium देखा ये होता है, right? This is parallel side 1, this is parallel side 2, and this is the height, right? तो सिमिलरली जो हमने अभी प्लॉट देखा है उसमें आपका जो शेप बन रहा था, ठीक है, दिस इज स्पीड टाइम ग्राफ and it's coming out to be this side. Let's say if I create a shape till t1, so it's coming out to be this shape, right? So it's comparable to this shape figure, right? It's comparable to this. This is the parallel side 1, this is the parallel side 2, and this is the height. This is the height. ठीक है. तो यहाँ पे इनिशियल 0 है, तो t1 minus 0 height would be what? t1 minus 0, it would be basically t1. तो यहाँ पे हमें t1 की वैल्यू दी हुई थी, it was 2 seconds, right? So that was 1 minus 0, 2 minus 0, so that is the base was, the height was basically 2 over here. Does that make sense? Yeah, so in the second one, when we are going to solve T2, so the height would be 4, T3 तक, yeah. T3. जी जी जी. That's Got it. the side at which the trapezium is standing, that is the height. Okay, thank you, sir. ठीक है. So I hope this is clear, and let me just came through another homework question which was given to you guys. It was just an experiment. उसको पूरा explain किया हुआ था लोगों ने. You just had to answer some उसके corresponding question, right? I'm going to just explain this theoretically. So motion of a falling object, right? इसमें हो क्या रहा है, हमारे पास इन लोगों ने experiment setup दिया हुआ है. Place something soft on the floor to absorb the impact of the masses. So they are throwing the masses, right? So ये जो mass है, this is the mass over here. They're dropping the mass and it's going to land on the floor, right? So you want to keep something soft on the floor so that it does not get damaged, right? Take care to keep you well away from the obviously falling masses so that you don't hurt yourself. So इन लोगों ने बताया कि how do you arrange the setup over here? So arrange experiment setup as shown in figure over here, figure 1.2.8, and investigate the motion of a 100-gram mass falling from the height of 2 meters, right? So जो यहाँ तक it is basically falling till 2 meters, right? यहाँ पे नीचे ग्राउंड है हमारे पास, ठीक है. A ticker-tape timer has a marker that vibrates 5 to 50 times a second and makes dots on 150 seconds interval on a paper tape. Throw it. Repeat the experiment with 200 grams and compare your results with 200 those of 100 grams. ठीक है. सो अब व्हाट इज द टिकर टिप टाइमर, मैं आपको ही बता दूं ताकि आपको उसके बाद एग्जाम क्वेश्चन इजी है. ठीक है. सो व्हाट इज द टिकर टिप टाइमर? सो टिकर टिप टाइमर इज एज फॉलोज. Basically you have a machine over here and then it extends a tape over here, right? So this machine basically marks or punches dots on this paper tape, right? This is paper tape over here. तो होता है क्या, it marks dot, right? It marks dots over here. So इसकी फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है? फ्रीक्वेंसी इज
50 hertz, right? So what does frequency means? K frequency, if you want to find the time takes, if you recall that frequency time period is 1 over frequency, so 0.02 seconds. ठीक है, so हर डॉट के बीच में जो गैप होगा टाइम का, that is going to be 0.02 seconds. So after every 0.02 seconds, you're going to mark another dot. ठीक है, so this is indicative timer over here. So आप कर क्या रहे हैं basically, आपने इसको लगा दिया. Just let me give you example. Let's imagine you have a car, a toy car. आपको आपने इसको बेसिकली अपने फिक्स कर दिया विद टिकेटिव टाइमर, राइट? एंड दिस इज द मशीन व्हिच बेसिकली मार्क्स द डॉट्स. ठीक है, एंड आफ्टर बेसिकली आपने ना इसको मूव किया विद कांस्टेंट स्पीड, राइट? कांस्टेंट स्पीड. So you will see this particular result on the tape, which is going to be the following. This is your, let's say this is your tape. ठीक है, you will see the following result. It has equal dots marked over. ठीक है, so ये जो distance है between the dots, this is going to be same. ठीक है, so let's imagine this is t equal to 0. So at t equals to 0.02, it will mark another dot. At t equals to 0.04 seconds, it will mark another dot. So at t equals to 0.06 seconds, it will mark another dot. ठीक है, so ये जो difference है between marking every dot is 0.02 seconds, right? That is a ticker timer. So what you can do, you can plot this graph. ठीक है, if you plot distance time graph, the distance between the dots, that is going to be the following, right? So this is time, this is distance. You will get this following graph. ठीक है, if you want to sketch इससे speed time graph, if you already know, ठीक है, if this gradient निकालना पड़ेगा, right? You want to find the slope. And how do you find the slope? You can see it's the straight line over here. So what's the slope of a straight line? It is distance upon time, right? That is going to give you speed. Since slope of a straight line is always constant, you will get this particular shape. ठीक है, and hence we know कि हमारे पास speed constant थी गाड़ी की. That's how you can derive this experiment. You can understand. So similar चीज यहाँ पे हो रही है आपके पास. ठीक है, similar चीज आपके पास यहाँ पे हो रही है in this experiment. Inside of the car you have a mass. ठीक है, so mass is getting dropped. So obviously going to have some this phenomena happening over here, right? Just want to compare. अगर मैं mass बढ़ा दूं तो फिर क्या होगा? Does that make sense? What is the question asking? यस ठीक है सर, बेसिक चलो नहीं समझ. जी हमजा. नहीं, मैं आंसर बता रहा था, बता दो या नहीं? नहीं अभी आंसर पूछ रहा हूँ. अभी आंसर नहीं बताया. ठीक है, मशाद सही है. क्लियर है? रेहान क्लियर है? Yes, sir. रेहान इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, सो नाउ यू नो व्हाट इज अ टिकर टेप टाइमर. एंड अब बस इंस्टेड ऑफ अ कार यू हैव अ फॉलिंग मास. ठीक है, तो अब मास फॉल कर रही है. टिकर टेप, दिस इज अ टिकर टेप टाइमर. ठीक है, दिस इज द टाइमर, टिकर टेप टाइमर विच इज मार्किंग द डॉट्स. ठीक है, एंड ये डॉट्स आपके मार्क हो रहे हैं. आप सही है जी. सो इन लोगों ने आपको ट्रेंड दिया हुआ है. ठीक है, सो आप उसको प्लॉट करेंगे, यू हैव सम डिस्कशन क्वेश्चंस. सो एवरी आंसर कैन वेरी, राइट? सबका आंसर अलग अलग हो सकता है, बट लॉजिक शुड बी सिमिलर, राइट? लेट्स से अगर हमदा ने बोला है कि अगर हम मास को बढ़ा देंगे, सो इट विल स्टिल हैव द सेम शेप. वी हैव डिस्कस दिस, राइट? वी हैव डिस्कस दिस कि if you make an object fall of different masses, it will come out at the same time, right? हम कर चुके हैं. So similar scenario पे आपको experiment setup किया है लोगों ने in a lab to basically make you guys understand के and ask some questions के will it be same or not. तो reflect to this theory जो हमने discuss किए in the class, that would help you guys to solve the question, right? So I guess it is clear now. Let's finish out the chapter and then I have planned some past paper questions with you guys. ठीक है, so acceleration of free fall. सही है. So what is this phenomenon? Let's discuss it out in detail. Let's imagine, let me just insert a blank slide over here. So imagine a person is standing on the roof of a building. ठीक है जी. Person is standing on the roof of a building and he throws the ball, right? A tennis ball.
Obviously it will accelerate, right, due to gravity. So if you have a multi-flash photo, let me first of all read the content क्या बता रहे हैं यहाँ पे. All bodies falling freely under the force of gravity do so with uniform acceleration of air resistance is negligible, right? But the air resistance is not going to have any impact on the falling of the ball, ठीक है? So this acceleration is called acceleration of free fall, that is denoted by italic letter, that is gravity G. Its value is exactly 9.8 meter per second square, but in your O levels we use 10 meter per second square, right? This is the definition which you're going to write in your exams if they ask you what is acceleration of free fall. So acceleration of free fall of an object near to the surface of the earth is approximately constant, right? Because we assume कि अगर हम अर्थ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, so every person is getting pulled by gravity which is constant, right? And इसकी value जो precisely है, that is 9.81 meter per second square, but we're gonna use, we're approximated to 10 meter per second square in a question, right? That is acceleration of free fall, right? So अब let's imagine this scenario जो आपको मैंने बताया कि मैंने बॉल थ्रो की, right? अब what would happen over here if I take, let's say I have a multi-flash camera. I have a multi-flash camera. So can you explain कि what is a multi-flash camera? Sir, it takes a picture every few milliseconds. हाँ, so basically it takes multiple photos after very small period of time, right? So ये पूरे बॉल के मोशन कैप्चर कर लेगा, ठीक है? Let's imagine this is the photo which the camera captured, ठीक है? इसके अंदर बॉल का मोशन ऐसे आ रहा है, ठीक है? Initially it was this, then it was this, then it was this, then it became almost constant, ठीक है? So this is the distance 1, this is distance 2 which increased, and then distance 3, distance 4, ठीक है, so on and so forth. So if you plot इसका distance time graph, ठीक है, imagining कि हमारा रेफरेंस पॉइंट ये है, so initially हमारे पास this is basically distance fall in, ठीक है, कि इसने कितना distance fall किया यहाँ से, this would be distance 1, this would be distance 2, ठीक है, and this would be distance 3 and so on, right? So it would start with initially 0 because this was the reference point. Distance fall in is 0 initially, right, when time is 0. So this would give you this particular sketch कि हमारे पास distance would be increasing, ठीक है? So if you want to find out the speed time graph from this, ठीक है, again you will find the slope, ये हम example कर चुके हैं बहुत दफा. You will have this particular shape, ठीक है, that is going to be a straight line, ठीक है? And if you want to find the acceleration of this motion using graphical methods which we have learned in recent classes, so you're going to get this particular shape of acceleration, that is going to be a constant value, ठीक है जी? So ये जो value होगी, that is going to be 9.81 meter per second square, ठीक है जी? So that states कि every object which is falling under gravity only, उस पे कोई air resistance act नहीं कर रही, ठीक है, कोई friction नहीं है, कोई opposing forces नहीं है, that is going to fall with constant acceleration of 9.81 meter per second square, and that is called acceleration of free fall. Does that make sense? Yes. Mashal, Hamza or Ayan? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So this was the graph which I have plotted in last slide. So ये distance of the ball falling है, so it's an increasing graph. तो ये इसे हम देख चुके हैं यहाँ पे, राइट? सो इससे आपने वेलोसिटी स्पीड टाइम ग्राफ देखा, इससे आपने एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ देखा, राइट? सो दिस बेसिकली एंड्स द चैप्टर नंबर 2